Hello. Welcome back to Almighty Sports Plus. और yes, by the way, this wasn't a pre-planned kind of a watch along, लेकिन वही है, हम प्लान कर रहे थे कि यार प्रीव्यू भी करें, जो हम आज शाम के लिए रखे थे, rather कल शाम के लिए रखे थे, लेकिन you know what happened in the evening, and it was obviously, it was a crazy day with Chelsea, and not just Chelsea, of course, for Brighton as well to an extent, जो हम नहीं cover कर रहे थे in that stream. So we might discuss ज़्यादा because there are a lot of updates coming in the last couple of hours, or talk about last couple of hours. भाई craziness has happened not just in the Champions League, दो मैचेस हुए, जिसके बारे में हम क्विकली डिस्कस करेंगे, लेकिन there are more matches to come, plus more importantly भाई एशिया कप. yes, it's almighty sports plus, तो बनता है भाई मेंशन करना. Congratulations to Pakistan, as much as it pains me to say it being an Indian भाई, the fact that India out हो गई है, लेकिन हाँ, congratulations Pakistan, congratulations श्रीलंका, because what a victory यार. अफगानिस्तान commiserations, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था. लेकिन हेलो डरेन, कैसे हो भाई? आई होप यू आर वेल, एंड यस, काफी सारा न्यूज भी आ रहा है साथ साथ, तो थोड़ा तो डिस्कस बनता ही है. बट अगेन कंग्रेचुलेशन आल्सो टू आयाक्स एंड टू स्पोर्टिंग, जो जीते हैं अपने रेस्पेक्टिव मैचेस इन चैंपियंस लीग. भाई वो होते हैं चैंपियंस लीग परफॉर्मेंसेस. लुक एट दिस मैन, आयाक्स, an Ajax जहां पर वो लोग इतने लोग को बेचे हैं. They have, I know it's Rangers still. They have pummeled over Rangers. और स्पोर्टिंग अवे भाई काफी अच्छी परफॉर्मेंस है अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट, व्हिच इज नेवर एन इजी टीम रिमेंबर टू बीट. फ्रैंकफर्ट बहुत अच्छा विक्ट्री था उनका वीकेंड में, एंड नाउ दे हैव लॉस्ट. आई डोंट नो व्हाट टू से देयर. लेकिन अगेन वी आर होपिंग दैट विल बी जॉइंड with Shrey as well. I'm just tagging Shrey on Twitter. हाँ, मैंने साथ साथ में ट्विटर में as always tweet कर दिया. So if you can just retweet that, it'll be great. So hopefully you can do that, as well as like the community post on Almighty Blues FC, as well as like the Instagram post as well. तो मैंने अभी भी ट्वीट किया है as well. तो if you can just retweet that, absolutely brilliant. और हाँ, भूलिएगा मत लाइक कर दीजिए स्ट्रीम, क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन. और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है फॉर पीपल हु आर गोइंग टू बी जॉइनिंग इन द स्ट्रीम. भाई सब लोग के लिए नीचे चलते रहेगा, तो देखना ये. दिस इज इंपॉर्टेंट ऑन अ पर्सनल फ्रंट, सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट. तो मेक श्योर दैट यू ट्यून इन एब्सोल्युटली. लेकिन हाँ, डेरेन बिगा भाई कैसे हो? लव फ्रॉम पाकिस्तान. जाबिद, कांग्रेचुलेशंस यार, मतलब मच रेस्पेक्ट. आई हैव टू से भाई, चैंपियन टीम जैसे खेले भाई पाकिस्तान. हाँ, आज थोड़ा सा लग रहा था कि यार डगमगा रहे थे, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इट वाज इतना क्रूशियल कि यार क्वालिफाई होके कि नहीं इन दैट लेवल. तो अफगानिस्तान आल्सो गिव इट देयर ऑल. तो इट वाज अ ग्रेट. भाई नसीम क्या है यार, नसीम इज एन ऑलराउंडर अवार्ड. मुझे पता नहीं था यार वो मार भी सकता है. आई नो फुल टॉस थे, फिर भी यार मारना इजी नहीं था, लो फुल टॉसेस. भैया व्हाट अबाउट थॉमस फ्रैंक एज मैनेजर? भाई बैटमैन, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई. काफी दिन हो गए आपको देखे, लेकिन थैंक्स फॉर कमिंग ऑन एज ऑलवेज. देखिए यार, थॉमस फ्रैंक, मैं तो बोलता हूँ इवन मोर देन ग्रैम पॉटर थोड़ा सा कम फेवर था, बिकॉज थॉमस फ्रैंक इन न्यू इन द प्रीमियर लीग इटसेल्फ. एटलीस्ट ग्रैम पॉटर प्रीमियर लीग में करते आ रहे हैं, बट आई हैव सम स्टैट्स टू शो, और ये काफी रिवीलिंग स्टैट्स है. एंड आई नो हम आएंगे लाइनअप्स एंड ऑफ कोर्स मैच तो हम वॉच अलोंग करेंगे ही, लेकिन थोड़ा रिवीलिंग स्टैट्स है. आई डोंट नो व्हाट यू ऑल थिंक अबाउट इट. आई नो काफी सारा बैकिंग आ रहा है, मैं बैक करूंगा यार. चेल्सी अगर जिसको भी अपॉइंट करेगी मैं बैक करूंगा, इवन बीट पोचेटिनो. आई हैव टू से दैट, बिकॉज इट्स चेल्सी फुटबॉल क्लब ओवर द प्लेयर और मैनेजर एनी डे. ठीक है. एंड अगेन हैट्स ऑफ टू थॉमस टुकल, जिन्होंने इतना सारा चीज हमारे लिए किया है. बट ये एक रिवीलिंग स्टार्ट है. अब आप लोग बोलिए, व्हाट डू यू ऑल थिंक अबाउट दिस? मतलब इज इट फॉर रियल? मतलब आप देखिए, दिस इज अ मैनेजरियल रिकॉर्ड ऑफ मिस्टर ग्रैम पॉटर. आर यू इम्प्रेस्ड बाय सीइंग दैट? आई एम नॉट, ऑनेस्टली मैं बोलता हूं, आई एम नॉट. आई एम बीइंग स्पॉइल्ड एज अ चेल्सी फैन. हाँ, वो काफी अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, बट दैट ब्राइटन साइड ऑल्सो उन्होंने ओवरनाइट नहीं बनाई है. ठीक है, इट हैज टेकन टाइम. आई रिमेंबर द टाइम्स व्हेन आई वाज थिंकिंग दैट या ब्राइटन दे शुड बी फिनिशिंग गेम्स. यस, दे डिडंट हैव फिनिशर्स एज वेल जब नील मोपे थे, लेकिन स्टिल दे हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ चांसेस, सो आई विल गिव इट टू देम. फिर भी they have not been that defensively as much as you would think they have, क्योंकि ब्राइटन के डिफेंडर अच्छे रहे. आप लोग बोलिए, मतलब what do you think about this? एंड यस, काफी सारा न्यूज अभी आ रहा है अबाउट टुकल सैकिंग. हमने शाम को रिएक्ट किया था, फॉर दोज ऑफ यू हु मिस्ड इट ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. यहाँ पर इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग न्यूज कमिंग एवरी हाफ डे. लिटरली वो आने वाले. अगेन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट पीपल, इवन चेल्सी फैंस एंड नॉट इवन जनरल प्रीमियर लीग फैन बोलता हूँ, क्योंकि इट इज नॉट अ नेसेसिटी, दैट इज एब्सोल्युटली अ फैक्ट. यस, इवन इफ इट कम्स फ्रॉम फैब्रिशियो रोमानो's mouth, इतना मैं जरूर बोलता हूँ. एंड यस, मैं यहाँ पर काफी सारा रीड करने वाला हूँ. डेरिन इज आल्सो highlighting them in the chat, but कोई नहीं. Let me just see. Okay, cool. Yes, so I think we might have even Mohammed join us. So let me just send the link to Mohammed in some time. I think वो लोग join करेंगे around 12:40. तो तब तक मैं I'll try and cover a lot. Meanwhile,
Certainly, you can join Mohammed at 12:40. That'll be perfectly fine. No problem with that. Let me actually see what all comments are. Bhai. Yeah, बिल्कुल मतलब again it's the learning absolutely. Asif Ali, yeah, Asif Ali basically behavior is unacceptable. I have to say that. लेकिन भाई आसिफ अली ने भी छक्के मारे भाई. इनफैक्ट दो छक्के मारे. करेक्ट मी फ्रॉम जाबिर और एनी फैन फ्रॉम पाकिस्तान वाज वाचिंग एंड जनरली भी जिन्होंने मैच देखा था. आसिफ अली का भी इनिंग्स काफी क्रूशियल था. एज मच एज बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल भाई. व्हेन यू हैव दैट एड्रेनलिन रश ना एक होता है. टूकल की बात हो रही है भाई. टूकल आल्सो बिहेवियर और कॉन्टेस्ट बिहेवियर वाज नॉट acceptable at all, in terms of the handshake. जो हुआ था एपिसोड. Zidane बोल रहे किशोर क्रिएशंस. Again we'll talk about it. Why do people want Zidane? Man had best team. He won't do that for Chelsea. You never know. Jaren, जब तक वो ट्राई नहीं करे, you never know. लेकिन I still feel the reason why people are saying Zidane because the egos at Chelsea. And yes, Fabricio का ही मैं रीड कर रहा हूँ भाई. वही हमें करने वाला था. फुटबॉल क्रिक्स बिग अप भाई, कैसे हो? अगेन मैं यहाँ पर रीड करने वाला. पीपल डू नॉट थिंक दैट दिस इज गोना बी अ फैक्ट. ठीक है, एक इतना बोलता हूँ 100% फैक्ट नहीं है, लेकिन नो स्मोक विदाउट फायर एज दिस से एज वेल. तो ये मैं शायद मैं पेस्ट भी कर दूं. लेट मी सी इफ आई कैन पेस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. काफी बड़ा है तो दो कमेंट्स में आएगा भाई. मैं हाईलाइट भी करता हूँ. देखिए, थॉमस टुकल डिड नॉट वांट चेल्सी टू साइन एंथनी गॉर्डन. Todd Burley's data analyst and pushed. Data analysts had pushed for the signing after being impressed by some of his performance metrics. Tuchel was prepared to leave Armando Broja, and he believes that he's not ready उस समय. मतलब this is basically contradicting some of the things जो Tuchel खुद ही बोले हैं in the press conferences. हाँ, अरमांडो ब्रोया के लिए ही इज एक्चुअली बिग अप, अरमांडो ब्रोया. तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आई वुड नॉट रियली बिलीव इट. सच में बोलूं तो हाँ, मे बी बिलीव दैट ही इज नॉट अ स्टार्टर. मे बी दैट इज अ थिंग. वही है ना, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन. आई एम प्रीटी श्योर टुकल आके फेब्रिशियो ने बोले. एज मच एज आई रिस्पेक्ट फेब्रिशियो, राइट? बिग अप टू 8744 ऋषिकेश एज वेल. Wow, Jabir, that's a superb stat, yeah. Thanks for sharing it again. Again, I don't know, man. अब Lukaku आएंगे तो hopefully, with the new manager he's setting in, people will think. लेकिन at the end of the day, you know what? Maybe that is also a reason. Because Ronaldo तो definite, वो तो definite है भाई. Ronaldo में तो disagreement था, clear है. Until the last day also थोड़े tempt हो रहे थे because we didn't have a striker. Lekin again, I don't see anybody apt other than Tuchel. Most probably Potter is coming now. Don't know how they will play exactly. You know what? दोनों ही खेल सकते हैं. As you know, Brighton खेलते हैं दोनों. Because अगर उनके पास लैम्प्टी होता है तो they try and go for a wing back thing. अगर उनके पास नहीं होता है, then I think इस season, even if I'm not wrong, कौन खेले थे भाई wing back first match में against Manchester United? Was it Trossard? Trossard actually played wing back, remember? Yeah, बिल्कुल. This is actually true because again, ग्रैम पॉटर, स्काई स्पोर्ट्स ने रिपोर्ट किया है. ग्रैम पॉटर को क्या हुआ था ना, टॉटनम ने अप्रोच किया था. आई थिंक दिस हैपेंड बिफोर कॉन्टे. तो उस समय मना किए थे वो. एंड थिंकिंग दैट ही प्रॉब्ली वांट्स अ टॉप 4 श्योरिटी और अ क्लब व्हिच इज मोर कॉमन इन टॉप 4 ना. मतलब नो डिसरेस्पेक्ट टू टॉटनम, ऑफ कोर्स ही प्रॉब्ली मेंट दैट इनडायरेक्टली, बट आई डोंट नो. तो लुक्स लाइक ही इज कन्विंस्ड विद द चेल्सी प्रोजेक्ट प्लस द फैक्ट दैट वहां पर कुकरेया है. आई डोंट नो हाउ विल ही बिहेव इन दैट सेंस, बट एलेग्री कैन बी अ गुड ऑप्शन. आई डोंट थिंक सो भाई. मैं थोड़ा इंप्रेस नहीं हूं एलेग्री के फुटबॉल से, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ, इनिशियल पार्ट ऑफ यूवेंटस अच्छे थे, बट देन ऑफ लेट नहीं. सेम लाइक जोसे मोरिन्यो, he was great 6 years ago, but not anymore, right? Simple as that. Brighton manager has always been the first choice. Yeah, we are sacking back 5 managers. You know what interesting part kya hai? Until basically Mr. Graham Potter रहे हैं ब्राइटन के मैनेजर, इन द मीन टाइम 3 चेल्सी मैनेजर आके चला गया. 3. आई नो थॉमस ट्यूकल शायद सबसे लंबे रहे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. लैम्पार्ड ऑफ कोर्स and Sari, of course. This is what we're talking about, and that's why it's great. Yes, by the way, before the football match starting, we can obviously talk about this. Asif Ali is Pakistan new finisher. I feel Sri Lanka has good chance of winning with the form they're showing. आज पाकिस्तान हराने ही वाला था, अफगानिस्तान bottled it. You know what? It was close. I have to say, Asia Cup is bringing the love for cricket again. Hopefully, मेरे में तो था. I hope many of you as well as others में आ जाए. उसी बात पर सब लोग भाई लाइक कर दीजिए भाई. लाइक्स कम हुए for whatever reason, so do hit that like button. Certainly helps. Yeah, I know that Tuchel is sacked, and I know most of us may not be happy. Generally, also people feel that's unfair. ठीक है, let's be honest about it. लेकिन भाई लाइक कर दीजिए. Certainly likes can go up so that YouTube बताए भाई हम भी लाइव है.
क्योंकि यार बहुत जनता लाइव है, तो होपफुली यू गाइस कैन हेल्प मी आउट देयर. शेयर भी करिए हो सके तो. लाइक आई सेड, आई हैव शेयर इट ऑन ट्विटर, इट ऑटोमेटिकली गोज. प्लस मैंने लिंक भी शेयर किया, एक पोस्ट भी किया ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ट्विटर एंड माय कम्युनिटी पोस्ट ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. और हाँ, यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है जो नीचे आपका चल रहा है, बैनर, मूविंग बैनर इज गोइंग. So I have the honor and pleasure to actually feature there. Hopefully you guys check me out, and of course I'll reconfirm that via post as well in the afternoon, not tomorrow. आज ही rather. आसिफली यार देख लिया था ये Potter और Poch, who you love to have more at Chelsea. I feel Potter play style could more suit. Well again हमें चाहिए someone like a Potter in terms of gameplay in the long run. जो चाहते थे Abramovich from all these years, हमें पता है he wanted that kind of football. Problem is, do we have such players, and how much time will it take for Potter to develop that? अगर है भी तो बाकी players कितना time लगेंगे to adjust that? और by the time will Chelsea be in the top 4? नहीं तो Potter will be out. That's what मैं और बाबा I think we discussed earlier on, also हम discuss किया है. That's the main problem. Gilmore या buyback नहीं है. Same problem. We have made the same mistake under Lampard. What we did with Mr. Tomori, same cheese we have done with Mr. Gilmore. क्या बोलोगे वहां यार? It is a terrible thing. Who knows, we might buy him back, who knows, but not no buyback. We have to overpay them. Indian team arrogant हो गई क्या? मतलब arrogant is a very strong term. What I would say is like overconfidence. Definitely there is a term. आप बोलोगे यार overconfidence at times लगती है, because आप देखिए है ना, when it comes to like bowling lineup, bowling squad जो pick किए, even in Indian selectors, I must say, imagine Mohammad Shami is not in the squad, remember, ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा इज नॉट इन द स्क्वाड. अगेन करेक्ट मी अगर वो लोग इंजर्ड थे कि नहीं, बट दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम. बट कोई नहीं, भाई सैक करना है तो सीजन से पहले सैक करो ना. क्या है ये एक स्टेबल टीम और ट्रांसफर करके टाटा बाय बाय, मतलब या बिल्कुल आई अंडरस्टैंड टोटली शायद आप जो बोल रहे हो. मतलब मुझे क्या लगता है ना, अगर वो लोग प्री सीजन से ही सैक कर देते तो it would have been almost like it's 100% unfair. अभी एटलीस्ट they have some data in front of them. और people, it's no secret, 100 day of Todd Burley and Iqbali का जो ओनरशिप रहा है, tenure 100th day पर ही आया है. तो clearly there is a case of they have some data prepared, and based on those data they have done this. But again, that's not the end. हमने share किया था about Anthony Gordon, right, that Tuchel did not want, and Todd Burley's data analyst probably wanted that. The second one is even more interesting, जो हमने briefly discuss तो किया था, but again I'm going to share it in 2 messages. आप यहाँ देखेंगे, rather 3 हो गया, चलो कोई नहीं. Burley's expectation was that Tuchel would be part of the transfer pitch. तो ट्रांसफर पिच, जब वो लोग ट्रांसफर्स के लिए लास्ट मोमेंट में जब बात करते हैं क्लब्स के साथ डायरेक्टली, तो वहां पर Tuchel will be actually there present. जैसे अपने फीफा में देखते हैं कि भाई you have the agent along with the player. On the club side you basically have the manager or the owner. तो यहाँ पर they expected manager and the owner to be there. Tuchel wasn't present. ठीक है. Tuchel didn't want to day-to-day contact, especially not when busy planning for a new season. अब ये I don't know, it's speculative. Or preparing for games. अब मैं there I will be with Tuchel. यार priority when it comes to transfers and getting the team ready, 100% getting the team ready should have been priority. तो वहां पर मैं back करूंगा Tuchel को. लेकिन if Todd Boehly who's the owner who's given millions or billions, आप अगर बोल रहे हो कि भाई आप नहीं आ रहे हो डायरेक्टली उनके मुंह पर, तो गुस्सा तो होंगे और जाहिर नहीं किया होगा, लेकिन eventually it was added on. Transfer deadline day was tumultuous. Tuchel became annoyed at the time it took to sign Aubameyang and felt Granovsky would have got a deal for Edson Alvarez over the line, and that's interesting. Exactly. But anyway, let's move on. Bhai, there is a Champions League game as well, and yes, people, come on, ho jaye. Let's get some predictions in the chat. Bhai, I'm going to show the lineups. I know I literally have 2 minutes for each. तो भाई बहुत सारे मैचेस है, सब तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्विकली नापोली, लिवरपूल और इंटर बायर्न का दिखा देंगे, राइट. तो यहाँ पर देखते हैं, पहले बारसा भी मैच है, जस्ट रिमाइंड्स मी, बट प्रीटी श्योर they'll be favorites. It's at home, Camp Nou, right? So I'm assuming they should be winning. Anyway, let's see. यहाँ पर देखिए नापोली, भाई नापोली जहाँ मैंने बोला एंग्विसा, क्वाराट्स के लिया, जिलिंस्की, ओजीमेन, पोलिटानो. This is a very good, kind of a front. I would say, 1, 2, 3, 4, 5 players are very dangerous. Rahmani is a decent defender, I must say. ठीक है. डी लोरेंजो सबको मालूम ही है भाई, इटालियन नेशनल टीम में खेलते हैं. यहाँ पर देखिए एलियट, फेबिनियो और मिलनर जो कैप्टन है. अब ये पता नहीं क्या भाई, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस बार लिवरपूल और क्लॉप स्पेशली. फर्मिनो स्टार्टिंग, थैंक यू यार, थैंक यू. मेरे यूसीएल फैंटेसी टीम में मैंने डेविड नूनेज को लिया है, वही गलती कर दिया और वो नहीं है शुरू करते हुए.
ये हक दिया मैंने अपना यूसीएल फैंटेसी। दैट रिमाइंड्स मी भाई, यूसीएल फैंटेसी भी अपना यार, अपना शायद कोड मैंने डाला है आज के दूसरे स्ट्रीम में, डिस्क्रिप्शन में डाला है, इफ इन केस यू वांट टू जॉइन, इफ यू नॉट जॉइन येट। बट अगर यहाँ देखिए, दे हैव अ डियोगो जोटा फिट बाय द वे, डार्विन नूनेज भी फिट है, फिर भी नॉट लाइक आर्थर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज आर्थर 100% खेलेगा अगेंस्ट एन इटालियन टीम जहां पर वो खेल चुके हैं, ठीक है, एंड इट्स अ चैंपियंस लीग गेम, तो आर्थर को ट्राई करना बनता था डिस्पाइट थियागो बीइंग फिट। अब एंड व्हाट द हेल इज दिस, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट नो, मे बी 100% फिट नहीं है, यही मैं बोल सकता हूँ। मैटअप भी है बेंच पे, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग यार, आई हैव नो आइडिया। पागल हो गया भाई, क्लॉप क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है क्लॉप? जस्ट हाइपोथेटिकली, विल यू एक्सेप्ट जावी एज चेल्सी कोच? नहीं देंगे जावी, 100% लूंगा यार, अभी लूंगा। हाँ, अगर आप मुझे देते जब टूकल था तब नहीं लेता अरित्र। चलो बिग अप यार अरित्र, कैसे हो? आई हैव टू क्वेश्चन रोहित कैप्टनसी हियर, cause this is reason MSG gave his captaincy to Kohli, not Rohit. Wow, interesting that. Let's see. Well, again, it's one tournament, it's 2 matches we're talking about. I don't think you can blame all to the captaincy. लेकिन हाँ, he's trusted Bhuvi in 2 games, and Bhuvi unfortunately नहीं रहा यार वो प्लेयर, looks like it, at least for timing. बारसा 4-0 विक्ट्री बोल रहे दिव्यांशु, ओके नाइस दिव्यांशु, वेलकम। नापोली जीतेगा, वाओ, किशोर क्रिएशंस विद द बोल्ड वन, द वे अयाक्स इज प्लेइंग, वाओ, आई हैव टू से अयाक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऑफ अयाक्स, भाई ये जो बंदा है ना अयाक्स का फॉरवर्ड, कुडूस क्या नाम है उसका भाई, क्या प्लेयर है वो यार, मस्त प्लेयर है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवे, but Napoli यार, again याद रखना, Kvicha is the guy that we are talking about, who is the guy for me. So he's the danger man when it comes to Napoli against Liverpool. Liverpool में Firmino यार बहुत important night है उसके लिए, because Jota is fit, Darwin Núñez is obviously back again, right? I'm very surprised, bhai. I'll be surprised people Darwin Núñez isn't playing. I thought that Champions League was his thing, यार, come on. Very strange for me. Anyway, the fact that वो red card भी मिला था, he didn't have every game, so बहुत ही surprising मेरे लिए. But anyway, Inter Bayern Munich जल्दी से देख लेते हैं people. Inter Bayern Munich का दे दीजिए सब लोग predictions in the chat. अभी शुरू, I think it's just about kicked off. यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग लाइनअप है, मैं लाइनअप करूंगा स्क्रीन पर अभी, बट लेट मी जस्ट नो इन द चैट व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट इंटर एंड बायर्न। ऑफ कोर्स मुझे तो लगता है बायर्न म्यूनिख पेल देगी इंटर को, अगेन आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन कंसीडरिंग जो हुआ था वीकेंड में, यू कैन नेवर नो, राइट? तो देखिए यहाँ पर दिस इज व्हाट दे आर प्लेइंग, मीनवाइल दिस गेम इज किक्ड ऑफ। मैं कौन सा गेम देखूं यार प्राइमरीली, आप लोग बोलिए, आपके हिसाब से करेंगे। थोड़ा चेल्सी की बातें भी करेंगे ऑब्वियसली, और क्रिकेट की बातें भी कर सकते हैं एब्सोल्युटली, क्योंकि एशिया कप का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया मैच था, बहुत मजा आ गया मैच देखकर, सच में बोल रहा हूँ। वो एक मूड बहुत ही खराब था मेरा चेल्सी के मैच। आई नो पाकिस्तान क्वालिफाई हुई है, स्पेशली फॉर इंडियन फैन इट्स नॉट एब्सोल्युटली आइडियल, लेकिन अगेन मैन एट द एंड ऑफ द डे दे डिजर्व ऑल द क्रेडिट दैट दे आर गेटिंग राइट नाउ। चलो अफगानिस्तान भी कमिजरेशंस एब्सोल्युटली। तो चलो यहाँ पर चलो जैको मार्टिनेज दोनों खेल रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग दैट। Okay, so okay, we don't have Romelu Lukaku still fit. Maybe that's why Inter. I forgot they were exactly. You know what? The only reason, just while a big up, always good to see Chelsea fans the house as well. Bhai, देखिए, just while I would say that the only reason I'm live right now, honestly, these are two pluses for me. One is that there is some football to kind of divert my mind from what has happened from Tuchel, but I have to cover the news as a content creator. Secondly, as you're seeing, यहाँ पर नीचे एक बैनर से चल रहा है. I hope everyone is noticing that यार. मैं ये बैनर चल रहा है ना, तो I don't think it's people are noticing it. तो यहाँ पर मैं edit करता हूँ. यहाँ पर there's some big news from the channel perspective as well as me यार. So this is what it is. यहाँ पर देखिए. This is what I was wanting to say as well. So I thought let me just share it with you all. डेरेन बोल रहे 3-1 टू बायर्न, 3-0 टू बायर्न बोल रहे किशोर क्रिएशंस। एंड विच गेम? ये वाला मतलब कौन सा वाला भाई? इंटर बायर्न देखिए, चलो इंटर बायर्न देख लेते हैं। आई थिंक आई पुट इंटर बायर्न लाइनअप ऑन द स्क्रीन लेटर, तो ये वाला बोल रहे किशोर क्रिएशन, तो आई एम गेसिंग इट्स इंटर बायर्न। यू वांट मी टू प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है, वो देते हैं। अंकित सर, आफ्टर टुकल एग्जिट लुकाकू, जिएश एंड कॉन्टे विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन। आई डोंट नो यार, सच में बोलूं तो मतलब व्हाट टू से। I don't know, unhappiest, happiest. It depends on basically what happens between now and the new manager coming. Director of football कौन है? A lot of things can happen. मतलब again, it's business after तो आप बोल सकते हो that Lukaku, if Inter are willing to pay next year, who knows? मतलब I would still be not happy getting Lukaku back ideally. लेकिन वो ये फुटबॉल चेंजेस, मैं यहाँ तक बोल दूंगा यार, फैब्रिगास को देखकर मुझे गुस्सा आता था। I'll be very honest. क्योंकि यार फैब्रिगास ने लिटरली लैम्पार्ड को दो तीन दफा धक्का मारा था खेलते हुए।
or he used to despise Chelsea when he was an Arsenal player. But again, things happen here. Arey bhai, what a shot. Man, it's all Bayern, man, in the first 3 minutes. All Bayern. Aussies already gave the team for World Cup. Just wow. Yeah, exactly. मतलब काफी लोग ने दिया यार. Imagine if we had JT at pitch, he would kill Ziyech with that pathetic attitude. I don't know about kill, लेकिन definitely भाई एक proper एक सुनाता तो सही, definitely. Ajax हर साल इतना top talents लेकर आते हैं, even though every year some other clubs buy the talent. You know, अरे Onana with a nice save. I think it was going wide anyway, but offside है. चलो ऑफसाइड दे दिया. यहाँ पर मीनवाइल क्या हुआ भाई? नापोली कोई देख रहा है चैट में? नापोली वाला गेम, नापोली लिवरपूल कोई देख रहा है? लेट मी नो. आई थिंक वहां पर क्विचा ऑलरेडी ऑन द बॉल एंड नापोली इज अबाउट टू स्कोर. ओ मैन, जस्ट मिस इट. नापोली जस्ट मिस इट यार भाई. कॉर्नर है. आई थिंक इट टुक डिफ्लेक्शन. क्विचा विद नाइस विंग प्ले यहाँ पर. That's great news with respect to Sony 10-2. Thanks, absolutely. Again, big up to Sony TV as well. Again, there's a testing left, so not technically it's not formal yet, but I thought let me just share it because I believe you all are my friends. Rohit Sharma said losing 2 matches not important. Probably meant we are making cricket interesting. He really said that? I don't know, man. Yeah, maybe he said कि यार 2 matches we can always lose, but again, I don't think he meant going out of the Asia Cup is not important. Come on. सॉरी यार, आज बहुत सारा बात किया हुआ मैं, एज यू कैन इमेजिन, आफ्टर द Tuchel न्यूज. सो आई एम लाइक वेरी थर्स्टी एट टाइम्स. तो अगेन पीपल, अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर तो बढ़िया रहेगा यार. आई हैव शेयर्ड the link with a couple of content creators as well. Let me actually put their links in the description. I think I forgot to put it. Let me add their channels in the description as well. तो या भाई, अभी बैक टू Tuchel भी थोड़ा सा बात करेंगे अभी, by the way. So yeah, as in I did show some stats about, I don't know, when it comes to Graham Potter's appointment, which is imminent, I believe. Just while I don't think I got your views. Let me know, what do you think about Graham Potter? Again, I have my doubts, to be honest, that he's a long term. मेरे ख्याल से शायद ही रहेगा यार long term. He will definitely be able to get some football going, but considering the forwards we have, I don't know if we are able to score so many goals. अब देखते हैं, time will tell, because Brighton भी आपको याद है तो पहले डेढ़ season में भी they did very well, but they always struggle to score goals. Abhi they have started finally after getting that consistent 11, and they kind of understand each other better. वो होने लगा थोड़ा सा. आप लोग बोलिए if you agree or not, but is there another choice? मतलब what would you have done? Let me know in the chat. And अभी भी chance है. It's not like Graham Potter 100% हो गया है. Again, there is a lot of news coming out, so we'll be sharing as and when we get it. Again, the fact that वो जो डेटा एनालिस्ट वाला पॉइंट था ना अबाउट गॉर्डन, वो तो मैं टुकल से अग्री करता हूँ यार. क्या मतलब, हर चीज कैन नॉट बी डन बाय डेटा एनालिस्ट इन माय ओपिनियन. बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज समथिंग व्हिच अच्छा, नापोली स्कोर. ओ माय गॉड, आई मिस इट. नापोली स्कोर भाई. बॉयकॉटिंग आईपीएल क्यों? I don't know, man. To be honest, मुझे टाइम नहीं मिला यार देखने का. If you can let me know. But let me see, man. Napoli स्कोर. मैं दूसरा मैच देख रहा था यार. ये क्या हो गया? Napoli भाई, ज़ेलेंस्की स्कोर पेनल्टी. Napoli को पेनल्टी मिला भाई. Who considered the penalty? If anyone can help me in the chat, जो देख रहा था वो मैच, let me know. Okay, I'm just seeing. Okay, I think we have Shrey in the house. Let me add Shrey as well. Hi Shrey, कैसे हो भाई? Thank you so much, Ankit, to have me on the screen. An absolute pleasure to me to be joined, and big up to the chat. And already happy to hear that Napoli have a penalty, so that's a good news. And already a very hectic day, Ankit, a very disappointing day. Yeah, मतलब इतना रिएक्शनरी रहे हम खुद भी, लेकिन ओवरऑल देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़ कमिंग आउट ना. मतलब एज इन व्हेन डे इज गोइंग, मतलब मैं तो ये भी बोलूंगा यार श्रेय, इट इज we have to take it with a pinch of salt. We have to be very careful on what we are believing and what we are not. Yes, at the end of the day, these are reporters who get 90% of the things correct. आई नो टोटली फॉल्स नहीं है, लेकिन यार 100% राइट भी नहीं है, क्योंकि प्रीटी श्योर टुकल ने खुद नहीं बोला होगा. इट्स अबाउट, लेट मी पुट इट दिस वे, हम कंटेंट क्रिएट करते हैं कि आई स्पीक अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम प्रीटी श्योर एक वॉच अलोंग में ऑन एवरेज 2 घंटे हम बात करते हैं, ठीक है. वो 2 घंटों में एक फुटबॉल मैच के वॉच अलोंग में प्रीटी श्योर देयर विल बी सम स्टेटमेंट्स वेयर इट कैन इजीली बी क्लिप्ड एंड मीनिंग दूसरा निकल सकता है. तो यू नेवर नो. It might be one of those Tuchel's intermediaries or basically Chelsea players intermediaries जिन्होंने
धीरे से रिकॉर्ड करके भेजा है इन रिपोर्टर्स को. दैट्स हाउ यू, लेट्स बी ऑनेस्ट, दैट्स हाउ दे गेट टू नो. नो डिसरेस्पेक्ट टू एनीवन, मतलब 100% श्योर वो डायरेक्टली तो नहीं बोले होंगे, ठीक है. तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. बट व्हाट विल बी फ्यूचर ऑफ टुकल, ग्राहम पॉटर शॉर्ट टर्म, आई फील. चलो श्रेय, आई हैव नॉट हर्ड योर थॉट्स ओवरऑल. प्लीज शेयर द थॉट्स विद द चैट यार. आपको क्या लगा है इन द ओवरऑल जो हुआ है आज? Ankit bhai, I'm like absolutely gobsmacked and disappointed as well. Very, very disappointed. The circus will continue, Ankit bhai, and the biggest reason is I think MattLaw has come with a report, and that came around, I believe, in Indian Standard Time, I believe around 3 p.m. And MattLaw came with a report that Chelsea had decided to sack Thomas Tuchel even before the Diners Zagreb game, and a meeting was scheduled in the morning. This is a more concerning part. Then that means that they were already deciding to sack him, and they did not sack him because they were afraid of the crowd reaction. For me, that is a massive worry that you wanted a manager to be sacked, but you went in the summer with him. If you really did not want him, then get him away in July. Why keep him? Why elongate him? Is beyond me, Ankit Bhai. I really think, Ankit Bhai, this is more like a PR because they did not want to sack him in July when he has such a good goodwill with the fans. Now fans are angry. Some fans, not most of them, we all are patient. Some fans yesterday were trending Tuchel out, so sad. And I think they worked on that. Now is the time. Let's sack him. Very disappointed. They wasted the time of him. I think on Tuchel, has Sir asked the question, I think Tuchel will take a break and he will come to back to a top club. So I think yes, update Ankit, I believe. हाँ, तो बेसिकली ये है. नो, एंड आई टोटली अग्री विद यू भाई. मतलब इट माइट कम बैक एंड बैकफायर. वो ये इट्स अ बैड लक और वर्स्ट लक ऑफ टुकल. और आई नो उड़ती हुई खबर यही है, ये भी आई थी बाय द वे, नापोली का एक इंजरी हुआ है लगता है. देखिए यार, मतलब देयर आर आल्सो रिपोर्ट सेइंग दैट टुकल ने लास्ट में बोला दैट ओके गिव मी अ चांस, गिव मी अ लास्ट चांस एंड ऑल दैट. ऑल दैट इज रबिश. डोंट बिलीव दैट. ऑल दोस दोस मसाला ऐड, जो मसाला ऐड करते ना, मसाला डोसा खाया आपने, उसमें मसाला ऐड करते वो सब. एंड अगेन आई विल नॉट लाई देयर. यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू जर्नलिज्म, व्हेन इट कम्स टू इवन कंटेंट क्रिएशन, मैं सच में बोलता हूँ, मैं ट्राई करता टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल बिकॉज वी बिलीव दैट इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. फॉर अ रीजन हम बोलते हैं, अगेन बिकॉज आई बीन फॉलोइंग अ लॉट ऑफ क्लब. बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, अगेन दे आर नॉट इन द रॉन्ग. वो होता है ना, एक इतना एक अंधाधुन प्यार है टुवर्ड्स समबडी और सम क्लब और सम प्लेयर, तो दे आर बायस्ड. तो वैसे भी जर्नलिस्ट भी होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो फुटबॉल फैंस, सबकॉन्शियसली थोड़ा सा बायस रहता है. तो डू नॉट बिलीव 100%, आई वुड से, बट यस, बट डेफिनेटली 80% ट्रू है यहाँ पर. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन रीड इट. तो बेसिकली बेन जेकब्स ने बोला है, एज पर द चेल्सी न्यूज, that Graham Potter has verbally agreed, or it's a matter of formal paperwork just before Fulham this weekend. Now, this is breaking because, again, Darren, thanks यार शेयर करने के लिए. देखिए, दोनों ही देख रहे हैं मानो मैच. तो नापोली का एक गोल हो गया, ज़िलेंस्की पेनल्टी, और बीच बीच में चेंज करो. आप बोलिए मतलब कौन सा मैच देखे. आई कैन फोकस ऑन एनीवन. मैं तो पर्सनली नापोली वाला चाह रहा था. फिर चैट बोली यार वॉच इंटर बायर्न, तो मैं वहां चेंज किया जब तक यहाँ पर एक गोल हो गया. तो मैं दोनों तो शायद ही फॉलो नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं आपका कुछ चला हुआ है. श्रेय, आप कोई देख रहे हो मैच साथ Yeah, I साथ में? wanted to ask you as well, like which match should I do? Because I think you are doing the two big ones, I believe. हाँ, 2 बिग वंस ही करते हैं यार, बाकी पता ही है रिजल्ट्स मोर और लेस. लेट्स बी ऑनेस्ट. आप कोई भी चुन लो, आप मुझे बता दो बस प्राइवेट चैट में, ठीक है. तो Yeah. एनीवे, तो कमिंग बैक टू दिस ना, वही है दैट इफ दिस इज ट्रू दैट वो वर्बली अग्री कर दिए, लाइक श्रेय, आई वुड रियली लाइक टू आस्क यू इवन इन द चैट भाई, मतलब डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल क्या गया भाई. टॉड बोली अपने आप को समझने लगे दैट ही इज अ स्पेशलिस्ट देयर क्या, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम. I think the interruption is too much, Ankit bhai. Like, I've not seen this much interruption. I think this reminds me of Roman when he came early, but Roman was very smart in that regards. I think this is not ruthless. I think many people, many rival fans are saying this is ruthless. I don't think that's ruthless. In reality, they did not want to work with Thomas Tuchel. They were waiting for the losses for them to take the action. That was very, very बेसिकली clear. 100 डेज वाला तो ये बहाना था ऑलमोस्ट कि यार 100 डे डेटा ये बोलती है. और मैं एक और निकालने वाला हूँ. हाँ, प्लीज कंटिन्यू मीनवाइल. Yeah, I think the data one, Ankit bhai, is an absolute gobsmacking thing that's come out. Like, why? Now, Ronaldo things are coming out as well. The Todd Boehly and Thomas Tuchel had a disagreement regarding Ronaldo, and you were talking about backing a manager from July, giving him the time. Do you really think that Graham Potter will love to manage Cristiano Ronaldo? Do you really think that Graham Potter will love to manage all these type of players when he's known at Brighton to manage young players, developing them to नहीं, be एक तो something big? क्रिस्टियानो So, रोनाल्डो वाला, व्हाट माय ओपिनियन इज, वहां पर गाड़ी निकल गई है,
ठीक है, जनवरी में देयर इज अ थॉट दैट मे बी विल कम इन जनवरी, बट आई डाउट, क्योंकि जनवरी में रिमेंबर अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट समवन हु इज एट 37 ऑलरेडी, एज मच एज ही इज अ गोट. January will be again 5 months down the line. So you don't want to take that risk, and you will still pay for a player unless he comes on a free. वो अलग बात है. But again, which and his wages is also बहुत high. तो वो तो मेरे ख्याल से गाड़ी निकल गई है. प्लस एक नया मैनेजर आएगा, तो भाई वो थोड़े तो प्लेयर्स चाहेगा, और ऐसे नहीं जनवरी में फिर से हमने 9 प्लेयर साइन करने हैं, वो नहीं होने वाला. तो एनीवे, मीनवाइल मैच में भाई 1-0 है नापोली, एंड इंटर वाले मैच में भी आई थिंक इफ नॉट 1-0 हुआ है. नहीं, 1-0 नहीं लिया भाई, इंजरी लग रही है डमफ्रीज को बाय द वे. लेकिन ये आप देखिए यार, बहुत टेलिंग स्टैट है. अगेन, एज मच एज मैं डिफेंड करना चाहूँ द सैकिंग, द फैक्ट इज, आप अगर चैनल देखते आ रहे हो रेगुलरली फ्रॉम द लास्ट फ्यू स्ट्रीम्स, आई माई सेल्फ हैव बीन क्रिटिसाइजिंग टुकल. अगेन, आई हैव ऑलवेज सेड टुकल इन, मैं वो भी एम्फसाइज किया हूँ, लेकिन टुकल इश्यूज थे यार. मतलब हु वुड हैव प्लेड मेसन माउंट व्हेन यू हैव 3 अदर मिडफील्डर्स ऑन द बेंच. फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज है. कल के मैच में देख लो, आई नो कल का मैच वाज नॉट टेलिंग, but there have been a lot of questionable decisions which has led to this जो है ना last 13 games का. while total जो है टुकल का in terms of tenure I think it's really good. टोटल का जो स्टार्ट है वो भी दिखाऊंगा, मतलब to be fair to Tuchel we have to show that as well. But Shrey, what do you think about this if you have to compare? Again, I've been one of the few people who was actually for Lampard in. I didn't want Lampard to be sacked either. आप बोलिए, what do you all think about this stat? I think for me, the Frank one was clear, because for me, the only reason I wanted Frank to leave at that time, because Frank was very, very inexperienced. So I really knew, whenever seeing the Frank matches, I knew he was out of depth tactically. I think with Tuchel, I saw this person win as a Champions League against all the odds. I see him go at Bernabeu and pull off one of the biggest comebacks we'll ever see. And if not for N'Golo Kante and the pathetic mistake, and Edward Mendy again making a big mistake, Chelsea, you never know, might have been the Champions League winner last year. And the same guy got us to the 2 Cup finals last year, played some fantastic game against Liverpool, took them till the end as well. This man has always brought big days, big performances. Against Tottenham in the second game of the season, we were magnificent as well. I think the record we can say, but I think we have to also remember that in between Thomas Tuchel record, this is why I think the records do not play. I think the good picture, Ankit bhai, is Thomas Tuchel was at a time when ownership was changing, the club was in turmoil, the club did not even have a proper flights to take the players. And in between Thomas Tuchel time, I think we have to remember, I think this is what I keep saying to rivals, Ankit bhai, like a lot of rivals keep going that last season Chelsea did not do well. People forget that once we lost to Real Madrid, Rudiger had already agreed a pre-contract agreement. Christensen had agreed a pre-contract agreement. I think what happened, Ankit bhai, was a lot of players down tools. Bayern का almost chance था, by the way, just to cover quickly, Sane to basically Mane. Sane to Mane बहुत बार सुनने में आएगा इस बार चैंपियंस लीग में. But yes, please continue. Yeah, I think Ankit bhai, even you will agree with me on this regard, that in between, when I think Ankit bhai, we all know that when we lost to Real Madrid, a lot of players got broken because it seemed like the season was over. We had no chance for the title. We had no chance for and the record that Ankit bhai Thomas Tuchel has, a lot of that was destroyed last year in between March and April, when I think we took like 14, 15 points out of 11 games. Where, to be very, very honest, Thomas Tuchel and the players, they were all waiting for the Liverpool final. Players were saving themselves for injuries. Rudiger was afraid that he's going to Real Madrid and he doesn't want to get injured. Christensen had already agreed an agreement and did not even play in the final, not even involved. So that's Ankit bhai, you're mute. Ankit bhai, you're in mute. अरे भाई मैं 2 मिनट से बोल रहा हूँ, सॉरी. There's a potential penalty review. This penalty basically, if I'm not wrong, is against Osimhen or for Osimhen? अच्छा, it's for Osimhen यार. नहीं यार, नहीं लग रही penalty. People let me know. भाई ball went away and then probably the Van Dijk's knee hit his what do you say, thigh. तो यहाँ पर मेरे लिए नहीं है penalty. कैसी scored? Okay भाई, congratulations यार. कैसी scored for Barca. Just nice for Barca fans. कोई नहीं, अरे कोई भी चलता है यार, चलो मतलब कोई भी जो भी चलता है. हाँ भाई श्रेय, आप आज हिंदी में बोलिए ज्यादा. आई थिंक आज हाँ बिल्कुल, मैं इंडियन हूँ भाई, बोलो ना. एंड आई थिंक अंकित भाई, मैं उसमें यही कह रहा था, आई थिंक हमें जो ट्यूकल का रिकॉर्ड है ना, वो ज्यादा डिस्ट्रॉयड है, जो हमारा सीजन का एंड का गंदा फॉर्म था, जिसमें प्लेयर्स एफए कप के लिए अपने फाइनल की वेट कर रहे थे. पेनल्टी दे दिया भाई, पेनल्टी दे दिया. ऑजिमन, इज इट फॉर रियल? मतलब पीपल लेट मी नो भाई, जो भी देख रहे हैं, नापोली लिवरपूल, सॉरी बट नापोली लिवरपूल देख रहा है, इज इट फॉर रियल पेनल्टी? मुझे हाँ, फाउल डेफिनेटली था,
लेकिन बॉल वेंट अवे यार, बॉल मतलब बॉल वाज लिटरली 2 yards अवे, और मैं तो आप जानते हो भाई लिवरपूल इज माय ऑपोजिशन, मैं हमेशा बोलता हूँ. तो Napoli getting this penalty was a little bit jittery in my opinion. Isn't there a stamp on Osimhen's right leg? I think it's justified as penalty. Okay, I might have missed the first stamp maybe. मुझे लगा ना जो नी हिट किया इस थाई, that is what I thought maybe. किसका penalty? अरे Napoli is getting a penalty and Osimhen is stepping up. The masked man, not that Aubameyang wasn't. लेकिन हाँ Osimhen भाई विक्टर ऑसिमन मान ले, देखते हैं भाई. अगेन आई वुड वांट इट टू बी पेनल्टी. क्या क्या बोलते हो श्रेय, गोल की नहीं गोल? आई थिंक अरे सेम सेव होगा. कर दिया, लेट हो गया आप. अरे भाई रिबाउंड मारना था. व्हाट रबिश मैन, रिबाउंड मारना था. दे मिस्ड द रिबाउंड एज वेल. हु वाज इट ऑन द रिबाउंड यार, मतलब आई थिंक इट वाज. मैं वापस से ओके या Manav, you're right. Manav, you're right. There was clear stamp. Virgil van Dijk stamped on Osimhen's right foot, and it was a clear penalty. लेकिन भाई, would you say bad penalty? It was a very good height, and yeah, it was a very good height in my opinion. And Allison made a save, but in my opinion, Osimhen missed that. In my opinion, no, it was a stamp on the first foot and then knee. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल. It was. आज काफी लैग हो रहा है for whatever reason stream anyway. Uh, and yes, Liverpool getting a leeway, bhai. Kya bologe? I don't know. Anyway, coming back to what Shrey was talking. Shrey, I cut you in between. Sorry, yeah. Please continue. Yeah, Ankit, wait, I was just like, I think you'll also agree that a lot of Thomas Tuchel record was destroyed by when the guys lost motivation. जब हम हार गए थे एफए कप का, सॉरी रियल मैड्रिड से मैच हार गए थे, एंड सारे प्लेयर्स कंसिडर करने लगे थे अपने उस पे एफए कप मैच पे. बीच में रूडिगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, क्रिस्टेंसन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, क्लब का डाउट है कि क्लब एग्जिस्ट भी करेगा नहीं करेगा. अंकित भाई, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ट्यूकल का बहुत सारा रिकॉर्ड उसमें डिस्ट्रॉय हो गया था, जो असली का उसका रिकॉर्ड था. वाइल फ्रैंक का जो रिकॉर्ड था, फ्रैंक का असली में क्या हुआ था, लीज से हम 3-1 जीतते थे, उसके बाद तो बस हारते गए हारते गए हारते गए जब इंपॉर्टेंट मैचेस थे. अब रीजन मुझे समझ नहीं आया सैकिंग का. फ्रैंक का समझ आ रहा था कि सीजन के मिडल में था, चेल्सी को टॉप 4 आना था, चेल्सी टेबल में 10 थी, एंड ओनर्स वांटेड अ गुड सीजन. यहाँ पे अंकित भाई मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि रीजन क्या था सैक का? नहीं रीजन तो भाई जैसे इट हैज बीन वेल डॉक्यूमेंट इन द पास्ट से 6 आवर्स, राइट, 7 to 8 आवर्स इनफैक्ट. तो रीजन क्लियर है कि भाई सबसे पहली बात तो भाई रोनाल्डो दे वर अ फैन ऑफ, एंड दे वांटेड टॉड बॉली इकबाली इनको वांटेड रोनाल्डो. वो लोग जॉर्ज मेंडिस से मिले भी थे, ही वाज एक्चुअली ऑफर्ड, और टुकल ने मना किया. ठीक है, देन अभी यार एक और आया है जो जैसे मैंने दिखाया, आप शायद लेट ज्वाइन किए स्ट्रीम, आई ऑलरेडी शेयर दैट इन फैक्ट, एंड दैट इज बेसिकली एंथनी गॉर्डन का. एज पर डेटा एनालिस्ट ऑफ बेसिकली टॉड बॉली एंड को, डेटा एनालिस्ट बोले थे भाई एंथनी गॉर्डन इज अ गो टू प्लेयर. ठीक है, तो हमें जाना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम. वाइल टुकल ऐसा नहीं है कि एकदम एब्सोल्युटली डिड नॉट वांट हिम, ही वाजंट इन फेवर ऑफ दैट. ठीक है, थर्ड थिंग इज आई थिंक टुकल चाह रहे थे कि भाई ब्रोया इज नॉट 100% रेडी टू स्टार्ट, तो उसको लोन में भेजा जाए. लेकिन आई थिंक दे वांटेड टू कीप ब्रोया, which in fact in that case probably I agree with Todd Bari अगर वो सच है तो. एंड एडसन अल्वारेज का जो है नहीं हुआ था वो द लाइन, बेसिकली Zakaria wasn't Tuchel's choice, simple as that. एडसन अल्वारेज का he wanted एडसन अल्वारेज on the last day of the transfer window, और वो basically he thought on probably उन्होंने बता दिया होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि भाई मरीना होती तो करा देती, that type of thing which is not taken rightly. Plus आप बात कर सकते हो इवन नंबर लुकाकू. यस, लुकाकू का भी न्यूज आई थी भाई, Czech and Marina did not want him, but no one actually told कि did Todd Boehly and co want him. It was all about Todd Boehly going with Tuchel. लेकिन हो सकता है even deep down they also wanted कि he stays because हमने 98 million as a club किया था, he has some market value. तो वहां पर I know that पूरा debt clear कर दिया था रोमन अब्रामोविच ने, they want to get something back. तो maybe that is what, as a business it wasn't a great job. इवन मे बी गिलमोर का तो देयर आर लॉट ऑफ एक ट्रांसफर विंडो जो हुआ था लास्ट वीक में वो. लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली ट्रांसफर विंडो में व्हाट एज पर रिपोर्ट्स टॉड बॉली इनको एक्सपेक्टेड टुकल इज टू काइंड ऑफ बी देयर. जब बात करते हैं ना क्लब के साथ कि भाई जब हम फीफा में खेलते हैं ना, बेसिकली either a manager or owner is there and the other club का the player and the player's agent. So they wanted that Tuchel should be there in those meetings. जो final meetings होता है in terms of the role of the player in the club, the exact wages, वो all those conversations, and of course in negotiations हो सके तो. Tuchel wasn't even ready to take calls at times. He was like नहीं मुझे first team football देखना है, तो that is more important, which I actually agree with Tuchel there. लेकिन again maybe expectations उनकी अलग थी. They have given billions in the club, so they have their expectations, which I cannot argue against. मतलब these are एक sum up करके the main kind of reasons. Absolutely there's no secret कि players भी खुश थे with Tuchel
kind of being sacked. Not all, but some players. So that might be also the reason. I don't know if they've spoken to the players or not. But अरे गोल होने वाला था अरे भाई what a shot. Bayern Munich almost goal हो गया यार. Muller with an awesome kind of a reaction, man. And of course बहुत अच्छा Onana ने save किया by the way for Inter. I think Sane passed it to Muller and who got a first reaction but just tapped over the bar. Lethargic Liverpool, the switching of the wings has been so slow and predictable. It's looking like these players are new to the system. Well, again, remember, I think it's the same old players, Manav, but you're right. As in looking like that, like I'm very, very surprised that Arthur नहीं खेले यार. मतलब talk about transfers. Aren't you surprised कि Champions League game में भी Arthur को नहीं खिलाया आज? अगर भाई कैन एक रिपीट कर सकते क्वेश्चन? आर्थर नहीं खेल रहे, आर्थर मेलो जो आई लिवरपूल थिंक के आर्टेटा साइनिंग तो थे. अंकित भाई, आई थिंक क्लॉप, जितना मैंने आज तक क्लॉप को देखा है लिवरपूल में, चाहे कोई साइनिंग लोन पे या स्लो भी आई हो, क्लॉप जल्दी लाते नहीं है साइनिंग्स को, बहुत लेट है. रॉबर्टसन आपको याद होगा 5-4 महीने बाद आया प्रॉपर, पहले एल्बर्टो मोरिनो खेलता था. और क्लॉप का He फर्मिनो के coaches साथ भी them. सेम था. वही क्लॉप को ना अंकित भाई रहता है कि ही ब्रिंग्स प्लेयर आफ्टर लेट, बट प्रॉब्लम ये है कि ये प्लेयर अब लोन पे लेके आए हो, सो यू हैव टू ब्रिंग हिम अर्ली. या फिर अंकित भाई यही है कि उनको एज ए रिप्लेसमेंट लाया गया, व्हेन अर्जेंट होगा तभी रिक्वायर्ड खिलाया जाएगा. तो आई थिंक अभी क्लॉप पेशेंट है. आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक शायद हमें देखने को मिले. Okay, fair enough, fair enough. By the way, Luis Diaz, भाई अकेले ही खेल रहा है. As always, it feels like in recent games. I feel somehow Chelsea will beat Man City in the Carabao Cup third round, even under new manager. Unfortunately, Man City is not winning EPL. And what? Come on. The Man City 100% favorites है EPL के लिए. There's no two ways about it. I think this is taking a punt anyway. No problem. What has happened to Salah? Misses a simple first touch control. Could have been कोई नहीं यार, it's form. Come on, Salah is a class player. As much as मैंने इतना रेट नहीं किया उन्हें over the years, I must be honest. लेकिन हाँ, I think you have to say that when it comes to goal poaching and the ability to take one-on-one and scoring, hitting those shots, I think he's better than most. I think it's just a matter of form and confidence and the way that things are going now with Liverpool generally. मतलब वही there's a little bit of pragmatism which has come, or rather hesitation which has come with Liverpool as a team. Again, I don't see them having a major problem like what a Chelsea has. I see them as simply put, कुछ ज़्यादा ही injuries हो गए थे, and maybe they are also kind of feeling that okay, that goal हो गया meanwhile. they are also feeling goal ho gaya meanwhile. Bhai, Sane with a brilliant take, man. Bayern Munich have scored on the counter almost, and Nagelsmann ko dekho bhai, that is Bayern Munich, and I've said it, bhai, Bayern Munich are one of the favorites for this reason. What a take, man, by Sane. One touch and boom, bhai, with the right foot or with the wrong foot, remember. So wahan par you can see the the strength of Bayern Munich. And again, people saying that it's a group of that. Sorry, but this is not a group of that in my opinion. मैं आप लोगों को maybe your expectations low कर रहा हूँ, whatever, from the group, but I believe that Bayern Munich are far more superior, and Barcelona as well to Inter Milan. What do you think, Shrey? आई थिंक ऑल्सो अलॉन्ग विद अंकित भाई, यू हैव बीन एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा. एंड मुझे भी बीच में ये लगता है कि सीरिया टीम्स ने हमेशा इंटर ने तो सीरिया डिसअपॉइंट करा चैंपियंस लीग में. लास्ट ईयर पता नहीं कितने सालों बाद लगातार 3-4 साल वो आई है, पहली बार नॉकआउट स्टेज पहुंचे थे वो पिछले साल. लाइक कभी शाख्तार, बोरुसिया मönchengladbach, रियाल के ग्रुप में होते हैं, तो कभी शाख्तार, रियाल और एक और टीम के ग्रुप में होते हैं. इंटर बाहर ही नहीं निकल पाती, एंड सीरिया की टीम डिसअपॉइंट करती है. एंड बारसा के पास भी एक्सपीरियंस है, लेवेंडोस्की, बस्केस, पीके. आई थिंक ग्रुप ऑफ डेथ नहीं है ये. आई थिंक शायद एक ये है कि इंटर एंड बारसा के मैचेस अच्छे होंगे, बिकॉज स्टिल इफ इंटर इसमें ग्रुप में किसी को हरा सकती है, दैट इज बार्सिलोना. बट आई थिंक मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इंटर डू वेल अगेंस्ट बारसा, पर कहीं ना कहीं विक्टोरिया पल्जीन से एक मैच में ड्रॉप कर दे पॉइंट्स, बिकॉज सीरिया टीम से कहीं ना कहीं ऐसा रिकॉर्ड है, पता नहीं क्या होता है चैंपियंस लीग में कि दे लूज टू सरप्राइजिंग टीम्स. एंड आई थिंक ये ग्रुप ऑफ डेथ मैं इसलिए बोलूंगा कहीं ना कहीं यूनाइटेड आर्सेनल के लिए ग्रुप ऑफ डेथ, क्योंकि जो भी टीम इसमें से बाहर आएगी यूरोपा लीग में, you do not want Barca, you do not want Inter, दोनों आ जाए, you do not want, because suddenly यूरोपा लीग में डिफरेंट है. यूरोपा लीग में if Inter will fall down, Inter have a better 11 right now, you can say, when both of them balanced है, आइडियाज है, प्रॉपर डिफेंस है, गुड स्ट्राइकिंग पार्टनरशिप है काउंटर पे, वहां इंटर को सूट करेगा खेल के यूरोपा लीग में. यहाँ पे अगेंस्ट बायर्न, आई थिंक बायर्न जिस तरह अंकित भाई में खेल रही है, बायर्न की इंटेंसिटी मोस्ट टीम्स नहीं झेल पाएगी. आई थिंक दे आर वाउंडेड लॉयंस. व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर, आई थिंक विलियरल के साथ जो गुफ्तगू हुई थी, जहां पे you can say that a lot of players were angry. I think that's where Ankit bhai that's going to happen, and I think Bayern are going to be very strong in this group. Like Barcelona Bayern next week is going to be. Okay. Thomas Tuchel sacking was definitely happening, but not this early. Maybe a Jan unfair. Yeah, वही है, मतलब between now and
अक्टूबर क्या ही तो मतलब उखाड़ लेंगे यार नए मैनेजर. हाँ, अगेन वी हैव 3 मैचेस बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक. व्हाट आई अंडरस्टैंड, आई थिंक 2-3 मैचेस तो कम से कम है. तो मे बी वही है, देख वो लोग देख रहे थे इट विल नॉट बी फेयर फॉर द न्यू मैनेजर टू कम आफ्टर दैट एंड देन मे बी हैव अ शॉर्ट रन ऑफ गेम्स बिफोर द वर्ल्ड कप. I think they were being more fair to the new manager, in my opinion, और वो थोड़ा टाइम भी लगता है for the new manager to be appointed, and of course the director of football hopefully by the international break आ जाए. तो मे बी दैट इज वाई वो देख रहे थे. लेकिन आई डोंट अग्री विद दैट फैक्ट एट ऑल. मैं तो काफी डिसएग्री करता हूँ. अगेन आपने अगर मिस कर दिया, ऑलमाइटी ब्लूज एफसी में हमने आज शाम को किया है इन टर्म्स ऑफ टुकल सैकिंग एंड व्हाट आर माय व्यूज. अभी जो स्ट्रीम हो रहा है वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर दैट रीजंस ऑफ टुकल सैकिंग जो निकल के आ रही है व्हिच माइट बी ट्रू और नॉट ट्रू, आई डोंट नो. अनंगत भाई, एंड जस्ट वाटर का सॉरी टू जो कट इन, न्यूज है. अभी न्यूज आई है दैट थॉमस ट्यूकल ने बिटवीन लास्ट ईयर मार्च और मई के बीच में, दिस इज बाय जेसन बर्ड जो थोड़ी रिलायबल है टेलीग्राफ के बारे में, उन्होंने कहा है थॉमस ट्यूकल रिजेक्टेड टू स्पीक अ चांस क्योंकि टेन हाग से पहले ट्यूकल को अप्रोच किया गया था बाय द यूनाइटेड हाई कैरी ग्लेजर्स, एंड आई उनको रिमेंबर. एंड बार्सा ने भी अप्रोच करा था सरप्राइजिंगली फॉर थॉमस ट्यूकल क्योंकि वो रीबिल्ड में जा रहे थे, एंड थॉमस ट्यूकल सेड नो. उन्होंने कहा चेल्सी टर्मोइल में है एंड इसमें ड्यूटी टू बी लॉयल टू द क्लब एंड वी हैव सैक्ड हिम. ओके, ये अगर आप कोड शेयर कर सको यार मुझे प्राइवेट चैट क्या में, आई विल बी. आपको ट्विटर पे शेयर कर दूं? ये ट्विटर पे है ये ट्वीट. हाँ, मुझे सिर्फ डीएम कर दीजिए. I'll try and share it on the screen as well for everyone. Oh my God, is it? अगेन यार जब भी यार चैंपियंस लीग वॉच अलॉन्ग में वही होता है ना, 2 मैचेस चलते रहते हैं और भाई मैं एक लैपटॉप में लगा सकता हूँ. लेकिन अगेन चलो मैं एक काम करता हूँ, फोन में लगा ही देता हूँ दूसरा 1 मैच. ठीक है, साथ में लगा ही देते हैं, फोन में भी तो लगा सकते हैं. अभी तक मुझे याद क्यों नहीं आया. बट लेट मी सी. एंड यस, बाय द वे आई वाज होपिंग दैट इवन मोहम्मद ज्वाइन करे यार. वो लोग उन्होंने बोला था 12:45 तक ज्वाइन करेंगे, बट कोई नहीं. I've anyway put Shrey ke channel as well as Mohammed ke channel, in the description below. People who are watching, do make a point. अगर आप by chance आपने नहीं subscribe किया, please subscribe to them as well. और यहाँ पर नीचे एक message आ रहा है, please watch that as well. Bayern will be third or fourth, wish it happens, but they will definitely be first. Unfortunately, Inter first, Barca second would be better. अरे नहीं होने वाला भाई, मैं बोल रहा हूँ. मतलब maybe I'm wrong. Football is a funny game. It can always happen. But again, just give me a minute, people. I'm just trying to put the match on my mobile phone so that I can follow both. अभी से ही कॉन्फ्रेंस लीग का रिंगटोन सेव कर दिया है. ओ माय गॉड, फरहान ज्यादा हो गया. तो कम ऑन मैन, थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म तो लाइए. आई नो दैट होता है बट कांट हेल्प इट ना. Anyway, let's see what Shrey has sent meanwhile. Okay, yeah, absolute Chelsea again brings a lot of it. Most of it is reliable, but again, I will take it with a pinch of salt. थोड़ा opinionated होता है. I'll be very honest, because at the end of the day, think about it practically. How do they get all this news? So again, I'm warning. मतलब again, the reason I'm saying this again and again because again I've watched football and footballing news. मैं तो कहाँ से newspaper collect करके देखता था यार जब social media नहीं होता था. I remember how it is. But anyway, you have to be very careful about what you believe and what you don't. Especially after social media coming in, masala add hota hai. I'll not lie there. Not me, but at least there are a lot of sources. Not everyone though. Thomas Tuchel turned down the opportunity to speak to Barcelona and Manchester United last season, telling both clubs he wanted to remain at Chelsea, feeling it was his duty given the turmoil at the club. Again, Jason Bird of Telegraph, who is basically quite respected. He comes on TV channels as well, from what I remember, on Sky Sports as well. If I'm not wrong, I've seen him a couple of times. But again, you have to be observant of the fact that happened last season. And again, are Todd Boehly and all responsible for it? Probably not. Will they be able to relate to that? Probably not. So I don't think if we can blame them just for this, but we feel sorry for Thomas Tuchel, and it's more like the players have not lived up to his expectation. That's what we would say. Manchester United may win EPL. कहाँ से बोल रहे हो भैया आप, रचेल खान? रियली? चलो देखते हैं. मैं याद रखूंगा यार ये आपका जो है प्रेडिक्शन. आई हाईली डाउट इट. But let's see. Anything can happen in football, जैसे बोलते हो. Definitely just Viola. It will help. Certainly, there's a lot of reaction from a lot of Chelsea ultras there. Salah sluggish, misses a chance. चलो इससे पहले मैं भूल जाऊँ. Shrey, can you please take the conversation ahead meanwhile? Yes, I think Mana Bhai has also put an update that Napoli has scored the goal and it's 2-0 Napoli. And at the moment, Liverpool, I think everything is on Chelsea because Chelsea are known for sacking managers. Well, Liverpool are in massive trouble the way it's going on. The next week, this could be the derby of Chelsea versus Liverpool. Who is going to disappoint the most next season? And this is going to be the derby next week, and I'm very excited. But now excitement has been curbed a bit as well. Well, Liverpool are in massive trouble. They have Wolves coming up,
who are going to sit back in the Premier League and just wait with countering with Podence, Neto, Adama Traore as well. I think Liverpool are in massive trouble this season, and I did not see this coming. I really did not see this coming. What's happening? I thought Champions League is Liverpool's greatest ground. They go there, they get the wins, and they get their momentum back. So I think people, मैं बहुत worried हूँ जो हो रहा है लिवरपूल के साथ. अगर लिवरपूल के फैंस चैट में, I think आपकी ओपिनियन भी चाहूंगा मैं कि व्हाई दिस हैपनिंग, क्योंकि मैं राइवल हूं तो आई कैन नॉट गिव प्रॉपर्ली लिवरपूल के बारे में ओपिनियन कि क्या हो रहा है. आई थिंक आपको बताओगे कि व्हाट इज हैपनिंग. लाइक लिवरपूल से मुझे उम्मीद नहीं होती चैंपियंस लीग में. लिवरपूल और रॉयल एंड कहते हैं, आपसे पूछना चाहूंगा आपको क्या लग रहा है, लाइक व्हाई आर दे स्ट्रगलिंग सो मच. नहीं यार, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग हेवी मेटल फुटबॉल खेलने का एट सम पॉइंट एक होगा यार. मतलब एट द एंड ऑफ द डे इंजरीज आर नॉट अ कोइंसिडेंस. इंजरीज आर नॉट अ कोइंसिडेंस, स्पेशली द मिडफील्डर्स. अब देखिए यार, हेवी मेटल फुटबॉल नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. आई थिंक, आई डोंट नो आपने रैग्निक का देखा है. रैग्निक का एक वायरल एक शॉट है, तो दैट शॉट में वो बोल रहा है भाई, इट्स नॉट अबाउट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वीगन प्रेसिंग, आप एक या दो नहीं बोल रहे हो. Everyone from basically the center back to the basically the striker, everyone has to gegen press. और वही प्रॉब्लम हो जाती है when it comes to that kind of football, which at some point it will basically come to fruition. अब उससे आप बोल सकते हो, इसीलिए मैं बोल रहा था, आई एम सरप्राइज्ड कंसिडरिंग कि भाई ऑलरेडी मिलनर, हेंडरसन एक्सेट्रा इतना अच्छा नहीं लगे है. एंड आई नो थियागो इंजरी से बैक है, इसलिए बेंच पर है, जस्ट टू बी प्रोटेक्टिव अबाउट हिम. लेकिन इट्स वेरी शॉकिंग दैट आर्थर इज नॉट प्लेइंग डिस्पाइट हैविंग जस्ट व्हाट 1 वीक ऑफ ट्रेनिंग विद देम. आई थिंक एक देना चाहिए, नॉट दैट ही विल बी बेटर और समथिंग, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है. एक होता है ना फ्रेशनिंग अप द मिडफील्ड, तो दे नीड सम फ्रेशनिंग अप जनरली बिकॉज ऑफ वही है, मतलब वीक इन वीक आउट जो खेल रहे. लेकिन फिर भी मैं लिवरपूल फैंस के लिए बोल रहा हूँ भाई, आई डोंट थिंक दे नीड टू गेट एज डिसअपॉइंटेड. आई नो इट वाज जस्ट बोर्नमथ, बट beating any team 9-0 is not a cakewalk. Any team, any Premier League team, any Championship team भी 9-0 is not a cakewalk. और वर्जिल वैन डाइक ने ऑलमोस्ट गोल मार दिया यार. व्हाट अ सेव मैन, व्हाट अ सेव, व्हाट अ सेव मैन बाय नेपोली गोलकीपर. भाई साहब बढ़िया गोल था भाई, ऑलमोस्ट हेडर से. लेकिन हाँ, देखिए, आई वुड स्टिल से आई वुड गिव लिवरपूल अ चांस. मेरे ख्याल से दे आर इन मच बेटर सिचुएशन. ऑल्सो द फैक्ट दैट नॉट ओनली द मिडफील्डर, डियोगो जोटा भी इंजरी से आ रहे हैं. इमेजिन दिस टीम विद द डियोगो जोटा फॉर एग्जांपल. मतलब आई वुड से एक शार्प एलिमेंट आ जाता है डियोगो जोटा बीइंग ऑन द पिच. अरे गोल ओ होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ भाई इंटर का. लेकिन कोई नहीं. एज वेल एज एक और जन यार, हम बोल रहे हैं दैट डार्विन नूनेज इन बिटवीन रेड कार्ड थी, तो एक होता ना मोमेंटम ऑफ दैट फॉरवर्ड लाइन थोड़ा बिगड़ गया था. तो आई थिंक they'll come back. It's just a matter of they need a break. I think after international break looks like they'll come back in my opinion. Yeah, Rachel Khan is asking your views about our Indian cricket team in Asia Cup. Should blaming one person correct? We are seriously missing all-rounder pacer like Irfan Pathan and Kapil Dev. Again, it's easier said than done यार, तुम ऐसा players मिलना, लेकिन पॉसिबल नहीं है इंडिया के लिए फॉर वट एवर रीजन. श्रेय से पूछते हैं यार ये बात. श्रेय, आज अगेन हमने बात की है अबाउट व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री. अरे गोल हो गया ऑलमोस्ट, लिवरपूल का होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं. एट द फार पोस्ट हावी एलियट मिसेस. लेकिन श्रेय, क्या लगता है भाई, पाकिस्तान 100% डिजर्व इट? आज भी भाई बढ़िया कमबैक था, ऑलमोस्ट लॉस्ट इट, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड कमबैक. एंड इंडिया के लिए क्या बोलोगे? आई थिंक अंकित भाई, मैं यही कहूंगा, आई थिंक चैट भी एग्री करेगी. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई थिंक डिजर्व तो करती है. चाहे पाकिस्तान अच्छा नहीं खेली, बट वो एक्सपीरियंस दिखा. थोड़ा सा दुख हुआ जिस तरह अफगानिस्तान हारी. आई थिंक आई फील उनके लड़कों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला. एंड आई थिंक अंकित भाई, आई थिंक सब लोग जो चैट में रेगुलरली होगी उन्हें पता होगा अंकित भाई एंड मैं कितने टाइम से इंग्लैंड की सीरीज होगी, वेस्ट इंडीज की सीरीज होगी, लाइव वॉच अलॉन्ग करे. तो अंकित भाई मैं एक ही चीज कहते थे कि ये क्या चल रहा है, कभी आप एक ओपन कर रहा है, कभी दूसरा ओपन कर रहा है, कभी तीसरा ओपन कर रहा है, कभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अंकित भाई करे श्रेय यार ये नंबर 3 पे पंत आ गया आज. मैं कह रहा हूँ अंकित भाई ये क्या हो रहा है. आई थिंक यही जब चल रहा होता है ना कहीं दैट इज द रीजन हम रोल नहीं ही नहीं अच्छा कर मालूम है रहे यार हैं. किसी को क्या कर रहे हैं, हार्डली. सच्ची अंकित भाई, एंड मैं सच्ची में कहूंगा हमें वरी होना चाहिए. बायर्न गोल. पाकिस्तान है लुकिंग गुड. अरे गेम व्हाट अपने अ स्टैंडर्ड सेव साइड. मैन. क्या गोल सॉरी हुआ सॉरी, व्हाट अ सेव. Triple और भाई ओनाना मैन, ओनाना is keeping just enter in the game भाई. ये कीपर सच में बढ़िया शॉट स्टॉपर है. माने actually getting the ball, dropping deep, getting the ball and playing I think Davis with the right footer. What a curler, low foot curler. लेकिन हाँ, I think Onana with the save and I think rebound जो हुआ था, they should have done better Bayern that is. And Onana man, 2 brilliant saves already कर दिया है भाई ओनाना ने. Yes, please continue Shri. मैं ये कह रहा था कि जब जैसे हम सारी टीम्स करे जा रहे हैं, कभी बोल रहे हैं आप सूर्य से ओपन करा रहे हो, कभी पंत से ओपन करा रहे हो, कभी आप किसी से ओपन करा रहे हो, कभी किशन, कभी राहुल. अब अंकित भाई मैं इतनी तारीफ कर रहे थे दीपक हुड्डा की नंबर 4 पे आके बैटिंग कर रहे हैं, फिर आप उन्हें ड्रॉप कर दो तो उनका मोमेंटम निकल जाता है. फिर अंकित भाई मैं थोड़े क्रिटिकल थे अक्षर पटेल नंबर 6 पे की
क्या हम उनको आगे देखते हैं? पर उन्होंने अच्छी सीरीज खेली वेस्ट इंडीज के खिलाफ एंड सडनली उन्हें फिर से ड्रॉप कर दिया गया। तो जब आपने पूरी खिचड़ी बना दी ना पूरी टीम की, तब आप रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मैंने कल बहुत सारे चैनल्स में देखा था क्रिकेट के, आई थिंक बहुत सारे लोग फ्यूरियस है जो चल रहा है। आई थिंक मैं उसमें गुस्सा नहीं हूँ बायलेटर सीरीज नहीं जीते, शायद मैं खुद चाहूंगा पहली बार हो जाए कि सीरीज ना जीते, वर्ल्ड कप जीत जाए। आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज है। एशिया कप का दुख नहीं है मुझे, पाकिस्तान से हारने का दुख नहीं है। मैच है, होता है, यू लूज, आप आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। मुझे प्रॉब्लम है वही मिस्टेक्स रिपीट हो रही है, वही चीज हो रही है। रोहित की कैप्टनसी क्लूलेसनेस लग रही है कि चाहते क्या है। अभी राहुल द्रविड़ आते हैं और कहते हैं अपनी कॉन्फ्रेंस में कि हम अब फाइनल स्क्वाड लेके चलेंगे। रोहित शर्मा कहते हैं कि अभी भी हम सॉरी चेंजेस करने मैं वाले यहाँ हैं। पे वेरी एक सेकंड कंफ्यूजिंग किट रुकूंगा भाई। आपको। यहाँ कुछ तो हुआ है इंटर वाले मैच में। आई थिंक देयर इज अ सबित्सर का टैकल ऑन जेको, लुक्स लाइक इट। आई थिंक देयर इज अ वीआर चेक। आई डोंट थिंक इज अ रेड कार्ड, जहाँ इट लुक्स लाइक अ बैक शोल्डर पुश ऑलमोस्ट। तो आई डोंट थिंक इट्स अ रेड कार्ड, मेरा ओपिनियन है। आई डोंट नो इफ एनीवन इन द चैट हैज वॉच्ड इट। मीनवाइल बार्सिलोना हैज स्कोर्ड। तो बार्सिलोना हैज स्कोर्ड इन द 34th मिनट विद लेवेंडोव्स्की स्कोरिंग। और भाई किसके वो यूसीएल फैंटेसी में, मेरे तो नहीं है। मैंने तो डार्विन नूनेस को ले लिया बेवकूफ जैसे, जो खेल भी नहीं रहा है। He'll come as a substitute and give me 1 point for whatever reason. But हाँ, that is what it is. I think मैंने बेंच चेंज करना भूल गया मैंने। That is even better. भाई I forgot to substitute. All because of Tuchel and Graham Potter saga आज। टाइम भी हो गया। भाई यूसीएल फैंटेसी में पहला ही मैच डे में हक दिया यार मैंने मेरे ही लीग में। आई डोंट नो इफ यू गॉट अ चांस टू जॉइन, लेकिन मैं शेयर करूंगा भाई, आपने ज्वाइन करना है हाँ, फाइनली मैं भी बिल्कुल करूंगा। आई इवेंचुअली। थिंक मैंने भी ये आपकी तरह काम करा। मैंने कल सुबह भी उठ के पता नहीं कैसे टीम बनाई, उसके बाद चेक ही नहीं करा। हाँ मेरा भी वही है, क्योंकि आज जो हुआ था ना उसके बाद यू आर सपोज टू सब्स्टिट्यूट द बेंच एंड गेट देम, जो सेकंड डे ऑफ मैच डे खेलने वाले, राइट? सेम मिस्टेक्स लाइक प्रीवियस वर्ल्ड कप। दानिश बोल रहे हैं डजंट मैटर हु परफॉर्म्स एंड हु डज नॉट, वी नो आवर 11 फॉर वर्ल्ड कप। या यू कैन से दैट। ओके, बट बाय द वे यार सब लोग आई होप लाइक कर दिए यार, और अगेन डू शेयर इट एज वेल। मैंने बाय द वे कम्युनिटी पोस्ट भी डाली है ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, यू कैन जस्ट गो एंड लाइक दैट सो दैट मोर पीपल आर अवेयर दैट वी आर लाइव, so that we are discussing a lot of things. Meanwhile, while Shrey was talking, I was trying to look up थोड़ा सा और न्यूज जो आया है, बट वही आ रहा है कि बेसिकली वही वर्बली अग्रीड ग्रैम पॉटर वाला न्यूज आ रहा है। एंड थॉमस टुकल टर्न डाउन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू बार्सिलोना मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट सीजन, एज वेल एज बेसिकली पॉजिटिव टॉक्स बिटवीन चेल्सी एंड ग्रैम पॉटर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्मल एनी टाइम। देखिए, और यहाँ पर मेरे एक दोस्त है, ही इज अ डेटा साइंटिस्ट हिमसेल्फ। तो देयर वाज एन आर्टिकल रिगार्डिंग, आई थिंक स्पोर्ट ने एक आर्टिकल डाला है अबाउट डेटा शोज पॉटर टू चेल्सी मेक्स दैट टैक्टिकल सेंस, बट लेफ्ट फील्ड सेरिया ऑप्शन वुड बी फन टू वॉच। पता नहीं ये क्या है। आई फील इट इज एब्सोल्युटली सेंसलेस। मतलब अगेन, इन माय ओपिनियन, मे बी मैं ओल्ड स्कूल भाई, टू मच डेटा इज आल्सो नॉट गुड। यू कैन नॉट जस्ट हायर एंड फायर पीपल बेस्ड ऑन डेटा अलोन। ठीक है, आपको देख फुटबॉल इज, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द एड्रेनलिन, और वो सब भी देखना पड़ेगा यार आपको। क्या बोलते हो श्रेय? मुझे ये लगता कॉन्टेक्स्ट। है कि मिक्स होना चाहिए। डाटा इज जरूरी, मैं ये डिनाई नहीं कर सकता, बट ये ऑफ है कोर्स। कि इतने वे में कि आप एक मैनेजर को फायर करोगे, वो बहुत ज्यादा लाइक आउट ऑफ ऑर्डर है। अगर ये हुआ है, मुझे लगता नहीं ये हुआ है। मुझे लगता है कि भाई ये है कि जैसे आपने रोनाल्डो की बात की थी ना, एक स्ट्रिंग इन द टेल की एक और बस बात होगी जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है रिलेशनशिप। वो एक बस एक फाइनल पार्ट था, फाइनल नेल, एंड आई थिंक उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर और मैनेजर में टूट चुकी। जब वो टूटेगी फिर तो कोई रह के फायदा नहीं है। कई प्लेयर्स भी है जो मैनेजर को सैक चाहते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैं यही बोलूंगा फैंस को कि अगर उन प्लेयर से परफॉर्मेंसेस नहीं आई, आई विल गो वेरी हार्ड उन प्लेयर्स पे ऑन ट्विटर, बिकॉज आज मैं बहुत सैड हूं कि मैं कई बड़े बड़े अकाउंट्स है, दे वर सेलिब्रेटिंग सैकिंग, दे वर पब्लिकली सेलिब्रेटिंग सैकिंग, क्योंकि उनका प्लेयर अब सडनली लाइनअप में आएगा। आई वोंट नेम, बट आई एम वेरी फ्यूरियस। नहीं नहीं, बोल दो नेम, प्लेयर्स को नाम कर ही सकते हैं। जियेश। आई थिंक मैं जियेश सिंपल एडिंग करते भाई, हमको भी पता है हमारा कैप्टन अमेरिका प्यूलिसिच, द वे सेलिब्रेशन पुलिसिक। चल रही है इज वेरी सैड। पुलिसिक फैंस, जियेश फैंस विल बी हैप्पी। मैं खुद, मतलब बाय द वे पीपल नो इट, मैं खुद जियेश फैन हूं, पुलिसिक फैन हूं। मैं तो हैप्पी नहीं था यार। मतलब अगेन, जो अंधाधुन वाले फैंस होते हैं वो अलग बात है। जो लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, अब अगेन आई नो पीपल माइट टेक ऑफेंस विद दिस, विराट कोहली इज द बेस्ट एग्जांपल। मुझे पता है यार, मतलब आरसीबी और इंडियन क्रिकेट टीम के ऐसे भी फैंस हैं जो विराट कोहली, दे जस्ट वांट टू डू वेल। बाय द वे, Osimhen injured yet again, people. Osimhen has been substituted. Very bad news for Napoli. और इसीलिए हमने ऑस्मेन के लिए नहीं किया, बिकॉज द गाइज एक्चुअली इंजरी प्रोन लुक्स लाइक इट। बट एनीवे, विराट कोहली जो है ना, पागलपंती जो होती है ना भाई, भगवान है, ये है, कुछ है, मतलब विराट मतलब हो तो कुछ नहीं है, उसके बगैर कुछ नहीं, मतलब दोस्त दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस विद सेम थिंग। मैं तो नॉर्थ अमेरिका में रहा हुआ, पुलिसिक के लिए होता है।
Unfortunately, it happens. That is what you should not do, man. At the end of the day, sport is bigger, your team is bigger, and then comes a player. I genuinely want to say it from the bottom of my heart. आप तब realize करोगे when your particular player leaves a certain club. मुझे बहुत जल्द में शुरू समझ में आ गया था यार. When Zola retired, when Robin, moved on to Real Madrid, or when Jose Mourinho, went on basically at the time, when left first time. तो तभी मैं अपना लेसन डेफिनेटली लर्न कर दिया था. और मैं बोल रहा था भाई नहीं यार, क्लब एंड स्पोर्ट इज व्हाट आई लव देम फॉर. पहला वो होता है. बट आई एम टू फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड. यार क्या क्या हो रहा है यार? व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? व्हाट्स रॉन्ग विद यू आदरी? आदरी मुझे मैसेज करो यार, ऐसा नहीं होता यार, मतलब ढंग नहीं है ना. व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? यार आप नीट का रिजल्ट खराब आया तो भाई अगेन फॉर समवन हु हैज, मैं इतना फेलियर्स को देखा हूँ लाइफ में, सक्सेस भी देखा हूँ, बहुत फेलियर्स देखा हूँ यार. ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट इज नथिंग. एग्जाम का रिजल्ट इज एब्सोल्युटली नथिंग. एंड आप जो कर रहे हो ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी रॉन्ग काइंड ऑफ अ मैसेज फॉर एवरीवन. ठीक है, तो एब्सोल्युटली नॉट. ठीक है, फॉर एनीवन वाचिंग हु नोज आदरी, प्लीज मैसेज आदरी यार. आदरी मुझे मैसेज कर यार, डेफिनेटली दिस इज नॉट डन यार. बात करते हैं आपसे. भाई अगेन देयर इज अ लॉट मोर इन लाइफ देन जस्ट अ नीट रिजल्ट. ट्रस्ट मी ऑन दैट. Is nothing. Trust me, is nothing in life. मैं I have been through basically multiple degrees. मुझे मालूम है what I'm talking about. At the end of the day, आपका जो होता है ना, it goes to basically nothing यार. Your degree. At the end of the day, it's all about what you are as the person which matters, and what you want to do, you achieve. और at the end of the day, ये इंडिया है. इंडिया में for whatever reason हम एज से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं. अगर आप बाहर जाओ ना, पीपल डू मेडिसिन, पीपल डू बेसिकली इंजीनियरिंग, people do MBA what at basically 50 60 70 years of age. You even know that. तो आप सोचिए उस बारे में. तो दिस वेरी सीरियस स्टेप आदरी, प्लीज. इतने सारी चीजें, डू व्हाट यू लाइक टू डू. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप एंजॉय करो लाइफ को यार एज मच एज पॉसिबल. कोई नहीं यार, मतलब इट्स जस्ट एन एग्जाम. अगेन डिस्कस विद योर लव्ड वंस एज मच एज पॉसिबल. एंड अगेन इफ यू वांट टू डिस्कस विद मी, आई एम ओपन. आई एम प्रीटी श्योर शे विल बी ओपन. तो प्लीज डोंट हेजिटेट. ठीक है, जितना हो सके हम बात करेंगे. लेकिन डेफिनेटली यार, कितने मैं आपको सीरियसली पर्सनली, आई एम लाइव, आई नो आई कैन नॉट शेयर विद यू एग्जैक्टली. लेकिन मेरे, आप अगर मेरा स्टोरी सुनोगे ना, मैं आज तक किसी का शेयर नहीं किया हूँ. यू विल रियली बिलीव मी दैट बेसिकली देयर इज नथिंग, नो एंड टू एनीथिंग. एट द एंड ऑफ द, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर योरसेल्फ. एंड दिस आई एम एड्रेसिंग टू आदरी अगेन. पीपल, दिस गोज फॉर एवरीवन आउट देयर. तो सोच रहे अगेन, आदरी सॉरी टू सिंगल आउट हियर, लेकिन आप इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज रहे हो ऑन लाइव चैट, आई हैव टू बेसिकली पुट दैट. ठीक है आदरी, तो मैसेज करिए. बाय द वे, मीनवाइल नापोली हैव स्कोर्ड. तो आदरी देखिए भाई, आप देखिए यहाँ पर इवन फुटबॉलर्स, देखो थ्रू शिट इतना करके दे रीच अ सर्टेन लेवल, एंड देन व्हेन दे स्कोर, जब वो लास्ट में आप अचीव करो ना कुछ कोई चीज, उसका इतना ही डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल महत्व रहेगा. तो दैट इज द होल पॉइंट. कम ऑन, आई होप यू चीयर अप बडी. आई वाज बिफोर अगेन आस्किंग व्हाट मे हैपन फर्स्ट. क्या श्रेय आप लेना चाहोगे ये वाला? आई थिंक यूसीएल तो आई थिंक अभी भी मैं ज्यादा चांस दूंगा सिटी को एज कम्पेयर टू पीएसजी. एंड आईपीएल आरसीबी पॉसिबल है, बट हमेशा आरसीबी लास्ट स्टेज में हमेशा कुछ कर देती है, तो दैट्स डिसअपॉइंटिंग एज वेल. वर्ल्ड कप 50 ओवर आई थिंक पॉसिबल, बट न्यूजीलैंड सर्टिफाइड एंड साउथ अफ्रीका भी, दोनों के दोनों सर्टिफाइड चोकर्स है, तो आई थिंक वो भी हमें रिमेंबर करना पड़ेगा. एंड मेसी जॉइंस रियल मैड्रिड, वो तो कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर वो हो गया तो मेसी की बार्सिलोना लेगेसी खत्म हो जाएगी, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. ओके भाई, मीनवाइल अगर बाई चांस, अगर आई नो सब लोग अभी जगेंगे, जो लोग पूरी दुनिया सरिया देखते नहीं है और हम लोग के चैनल्स नहीं देखते ना, सब लोग जगेंगे. भाई क्विच्चा कौन है भाई? ये क्विच्चा कौन है जो सेकंड नेम हम प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे? भाई जो गोमेज टर्न हो रही है एकदम, मतलब वो लिटरली जो अपना एंटनी वाला जो रील है ना, टर्न होने वाला, जो गोमेज अपने आप टर्न हो गया वैसे, उल्टा डिफेंड करते से. और क्विच्चा भाई कैसे बीट किया उसको और क्रॉस किया भाई, बढ़िया गोल नेपोली का 3-0 हो गया है. मीनवाइल yes, 3-0 Napoli. I'm a CS student, was aware that I might face failures. Be confident, Adri. एकदम बिल्कुल यार. आप देखिए, मतलब again to share with you lot of things that everyone has a problem. Again, maybe your problem is probably the toughest, लेकिन it's not an end to it, Adri. I'm again saying you. Hope Adri आप सुन रहे हो, और अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज मुझे मैसेज करिए, श्रेय को मैसेज करिए, उनका भी कॉन्टैक्ट है नीचे. डू राइट ऑन दिस चैनल एंड वील डेफिनेटली कनेक्ट. आपको कुछ हेल्प चाहिए तो वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, योर लव्ड वंस. ठीक है, एब्सोल्युटली उसमें कोई शेम का बात भी नहीं है. इट्स नाइस दैट यू आर शेयरिंग दैट, क्योंकि एटलीस्ट यू आर शेयरिंग विद समवन एंड आई एम ग्लैड दैट यू कंसीडर अस एज योर फ्रेंड. ठीक है, सिंपल एज दैट. या बिल्कुल. अगेन क्वरात सेक लिया.
I hope I pronounced it right. Manav, I don't know. I took him UCL fantasy. Again, मैं भी लिया हूँ यार. ये एक बंदा, लेकिन शायद मैंने 11 में नहीं डाला है because I forgot to substitute. नहीं, कोई नहीं. He was one of the top youngsters in league before joining Napoli. Okay, nice Khatib. Thanks for sharing that. Again, सच में बोलो तो मैं इस season ही गौर किया हूँ पिचा को. Last season मैंने गौर किया था. I think that was a big move for Napoli. For me, but it has to be basically the fact that he has to be pre-signed on a contract. Yeah, as simple as that. He's so good. This guy is so good. अरे गोल किसने मारा है? लेकिन गोल तो किसी और ने मारा ना. Let me just check it up quickly. Meanwhile, half time हो गया यार. Napoli लिवरपूल में होने वाला है and इंटर वाले में हो गया है. तो people, what do you think? Inter Bayern 1-0. Onana man of the match अभी तक. Okay, Zambo Anguissa got the second goal. Simeone got the third goal. Okay, fair enough. And Zelensky तो हमने cover ही किया था. Okay, meanwhile we have Mohammed in the house. Mohammed, big up bro. How are you? How can I be? Yeah, I don't know what to say, man. Thank you for having me on, but yeah, tough day as a Chelsea fan. Just go back to work from work, so I'm sorry for. I did see your tweets, bro. It's just that I've been in back-to-back streams myself, so that's why I couldn't kind of respond to that. But yeah, as in, definitely we have just covered the Champions League game, that we have been talking on and off about both the cricket, about India, as well as the Thomas Tuchel part, and both are like 2 bad days. And of course, Thomas Tuchel is a much longer thing. But what is your thought? Again, a lot of news coming out in the last 2 hours. I don't know if you've been up to date about basically him not agreeing to the data analysts about Anthony Gordon, him not agreeing to the fact that Broya should be kept. A lot of news is coming about he was not agreeing to be a spokesperson when it comes to the transfer negotiations and stuff like that. He wasn't available. He prioritized on the team training, which probably I agree with him. But again, there have been times whereas they didn't probably like his approach, or rather his response to a need being there. So overall, where are you on the Ronaldo thing, for example? A lot of it looks like the DM is something that he didn't agree upon. Zakaria as well. I think what I want to start off by saying is, firstly, Tuchel is not responsible and should not be held responsible for any of our transfers coming in or going out. There's a position in football which is highly regarded, director of football. When Marina Granovskaya left, Chelsea should have realized it's not Tuchel's role in this club to go week in, week out and look at analytical data in terms of what player fits his style of play and what doesn't. It's as simple as that. His job was to come in. There's a difference between a manager and a coach. Tuchel is more of a coach than a manager. A manager manages everything around the club, and a coach's job is to just train the players, and that's what he was doing. And I don't want to go into Tuchel's personal life and say comment anything on that, because that is also being brought up into public, which I think is completely wrong and should not be done. And whatever is happening in his personal life is his thing. So taking that into consideration, I think obviously with the news that's come out, and I've just read it right now, that the Ronaldo news and then the Zakaria news, as you mentioned. Look, at the end of the day, Boli needs to realize that Tuchel knows football more than Boli right now. And no disrespect to obviously the investments Boli has made and the clubs that he owns or the teams he owns in the US, but when it comes to football, Tuchel has an idea of what's best for him and his team. So realistically, to say Boli stop talking, and this is a concern that's going to be there for every other manager that comes at Chelsea, where if you don't listen to Boli, suddenly you've cut off ties and you've got a few more days before bang, you're replaced. So this does not set a great example, which is why I'm very scared about Potter coming in at Chelsea and what that is going to look like, because I don't know if you saw the tweet I put out, but about Potter coming in, what he did at Brighton is something that he's been doing for the last 3 years. And even then, the pressure you're under at Brighton is compared to Chelsea is a lot less, in my opinion. No disrespect to Brighton, but when you're fighting for mid-table, it's not as hard as when you're fighting for a title every year, fighting for Champions League positions every year. So not sure whether Boli is going to give Potter the time that he requires, which is why I'm a bit concerned. Zidane is someone I was looking forward to maybe being linked with, but I don't think there's a lot of talks
in that. So I think as a fan today, I lost hope in the idea of long-term manager at Chelsea. Under Roman Abramovich, that hope was reignited when Lampard came in, and we kind of thought this is going to happen. And when he left, we said, right, this is the end of it all. And then suddenly we won the Champions League, and you've got someone like Tuchel who wants to build a core team. And as I was saying to Shrey yesterday, I think we were saying it on the podcast quite a lot, where he doesn't have a core team, and he's not been able to build that core team. And suddenly, when he makes these signings, the 6 signings that he's made this summer, including a few young signings, which were going to come up into the first Chelsea team maybe throughout this season and next season, he would have had a perfect opportunity. Which I don't. And what surprises me most is these news coming about Bowley not speaking to Tuchel over a few transfer disputes and this and so on and so forth. If this just makes Bowley look immature in terms of how he's dealt with things, because at the end of the day, Tuchel has not publicly said anything about Bowley or them having any discussions where Bowley felt unhappy or Tuchel felt unhappy. Whereas Bowley has made a statement by sacking Tuchel 7 games into the season. So honestly, very, very surprising move from the club board of directors and Bowley. So it'll be very surprising to see what happens from now on. Yeah, as in, let's see. As in, again, it's interesting for the neutral. I'm pretty sure here. But again, coming back to the Champions League talk, and I know as a matter of fact, Shrey wants to go in a couple of minutes. So Shrey, bhai, before going, firstly, Liverpool in the mud. Sorry, Liverpool fans, I have to use that term, bhai. लेकिन लग रहा है वो है. Again, you have to go to Napoli. Napoli's midfield is kind of ruling that game. Not just that, obviously, Kvicha is someone we always said कि भाई he has been in the preview as well as now. लेकिन हाँ, one of us is also utter domination. Inter, meanwhile, भाई Onana is just about keeping Bayern at bay. Just 1-0, you never know. तो श्रेय क्या लग रहा है भाई? एक तो चैंपियंस लीग का आज रात को, और as well as basically in the long run, and of course last final thoughts from you on Potter. I think for me, Ankit bhai, in the Champions League match so far, I think Liverpool will respond. I think in the second half, I think they will get a bit of Helleking and a bit of worse from Jurgen Klopp, but too much change I think is not possible. I can see this end 3-1 Napoli so far. While I think Porto and Atletico is a match, Ankit bhai, I was already excited. This is a very, very good group, to be honest. Group B is hard to predict, and I think Porto is going to surprise Atletico here for me. That's a good one. Along with that, Ankit bhai, I will say one thing, and that is for me is that at the moment, if you see Barcelona and Victoria Plzen, I think I can see Barca now taking a bit of floodgates, getting open, getting a bit more goals and enjoying themselves in, so sending a bit of statement. I think Tottenham and Marseille is surprising because it's Tottenham's first Champions League game in so many years, and if they drop points today, I think I know why. Let's see what is the lineup there. But I think वहाँ पर Tavares खेल रहा होगा ना आर्सेनल का. नहीं? Yeah, I think so. Because I think that's a good factor. Tavares. Just joking anyway. Plus I think अच्छा Marseille का we don't have अच्छा this game में we I think Payet is on the bench, surprisingly. Okay. But He's also dangerous. Like he can come and change the game again, भाई. गेंडोजी और टवारेस भाई एक्स आर्सेनल आप देख लिए. बाई भी है. एक you know एक एक्स. And Bai made some shocking statements, Ankit भाई. आपने उसकी statement पढ़ी है जो कल आई है, जो Bai की statements निकली है? क्या निकली है? Bai ने कहा है कि I was very sad कि मैं बहुत दुखी था यूनाइटेड में. यहाँ पे इंग्लिश प्लेयर्स को बहुत बायस मिलती थी. चेल्सी में ऐसा नहीं होता, टॉप क्लब में ऐसा नहीं होता, लेकिन यूनाइटेड पे इंग्लिश प्लेयर्स को बहुत बायस दी जाती है और चांसेस नहीं मिलते. हैरी मैग्वायर के बारे में बोल रहा था. लेट्स गेट दैट राइट. वी कैन एटलीस्ट टॉक. वो नहीं बता सकते. टेन हाग से भी आज पूछे, टेन हाग ने कहा मैंने तो ऐसा नहीं करा, आगे आई डोंट नो. नहीं क्या है ना, मैं बोलता हूँ अगेन पीपल इन द चैट, आप लोग भी बोलिए भाई अगर ये सच है ना अबाउट बाई, ये सच है क्योंकि यार ऑन मेरिट I don't think Maguire deserved a place latter part of last season, beginning part of this season. ठीक है, वो क्लियर है. तो I think Bai has not got enough game time as what he deserved in United towards the end. But again, क्या उसने इतना अच्छा किया? नहीं. He was also injury prone. There was a lot of issues with Bai as well. So I don't totally agree with him. लेकिन I hear him out absolutely. मतलब वो गलत है, लेकिन openly coming and saying that it's because of English and all that, वो उसका assumption होगा in my opinion. Again, I might be wrong. Divyanshu Bore, LFC has been demolished. If they can continue this form, then they will not even make it to the top 4 and will be locked out of the UCL group stage. Again, पहला ही match day यार, Champions League nights. If you have followed the Champions League from again, my first Champions League was 99-2000. मुझे पता है यार, Champions League away games are never easy. And I don't mean saying that Napoli should beat Liverpool 3-0. I don't mean that. But
they are never easy. Even Zagreb, lot of people criticize. मैं खुद criticize कर रहा था कल on tweets and posts. लेकिन I don't mean Tuchel out by that. You know, that's what I mean. But again, Shrey, thanks यार join करने के लिए, काफी अच्छा लगा. Again, काफी चीजें होगी between now and then. Again, people, there is a quick announcement that I am hopefully going to be on Sony TV tonight. So please check me out. I'm telling that because Shreya, आप भी बोलना, definitely hope to get some feedback. Chalo, bye. Thank you so much, Ankit bhai. People, do subscribe to Ankit bhai's channel. Big up to Mohammed bhai as well. Do subscribe to CFC Talk Pod as well. And thank you everyone to have me on. Big up to the chat. Thank you so much everyone. Thank you all. Chalo, bye. Yes, people, as Shrey FC को मैं tag कर दिया, just so you know. Again, and yes, absolutely, bro. And yeah, just continuing. I'm just looking at some news, bro. As in, meanwhile, the data scientist thing is, I don't know. I still don't really buy it. And again, Mohammed, you might add to it. मतलब आपको भी idea है ना in terms of how these reporters go. I know हम बहुत closely support करते हैं, or rather we kind of follow a lot of reporters, as in that's something that we've been doing when it comes to journalists. And of course, one of us, of course, I would give a huge shout out to one that I personally know, Nishal. Again, मुझे मौका नहीं मिला निशाल से बात करने की about this topic. I'm pretty sure he's also moved because he's a Chelsea fan. But क्या लगता है भाई आपको, मोहम्मद, in terms of basically them bringing this news, how much of it you think you will like just take it as it is? Like, again, not taking names, लेकिन pretty sure you need to take it with a pinch of salt, नहीं? Sometimes. मैं नहीं believe करता पहली बात तो with all of this drama whatever is showing up कि यार ये player ये वो whatever because हो सकता है club की तरफ से एक negative PR हो, and I'm not blaming the club for it, but I'm just saying agents से भी होते हैं काफी बार, maybe it's someone else doing it. Exactly, agents होते हैं या फिर कभी-कभार journalists खुद करते हैं just to get hits out of it, just to see कि यार थोड़ा बहुत इंटरेक्शन अपना बढ़ाएं, थोड़ा बहुत फॉलोइंग अपनी बढ़ाएं इससे. So that's something that I think is what's happening majorly. Or for me, yaar, firstly, if you're sacking a manager, that's the end of the conversation. There, and if you're the owner of the club, then you don't need to explain it, or these type of articles don't need to come out. Because if you were that bothered by it, then wording on that official statement by Chelsea would not have been parted ways; it would have been sacked. It's as simple as that. I highly doubt Chelsea are a club who are scared to write sacked on their articles when it comes to managers. We've done it in the past as well, and if we feel that's the way it can get basically it is, legal, na? Legally it can get very complicated. If agar वापस they I know, but I'm saying as in they parted ways. The way I look at it is, if you say parted ways, then that's Tuchel saying, "Yeah, ठीक है, I'm fine with you guys firing me." And Tuchel's happy with getting fired. The board is happy with Tuchel getting fired. So they leave on a mutual discussion. When I see a sacked on an article, I say, yeah, okay, Tuchel was not happy with it. Boli was the one who said, all right, this is it, the end. So for me, what comes there was this news in the morning when the first news of Tuchel being sacked came out, and the surprising part was none of the journalists reported this before the official statement. Because I woke up around 11 a.m. my time, and I was scrolling through Twitter. There was nothing, not a single journalist saying that there might be a chance that there's a possibility in the next few days. एकदम मतलब non-stop, बोलते हैं ना, non-stop बजने लगा with all those DMs and all those tags. So I'm like, okay, fan, what happened? Like, then again, other content creators are like sent me, and like what has happened. Shrey himself sent me a message, and then मैंने check किया तो मतलब वही everywhere was DavidOrnstein and MattLaw के basically the messages came across. And yes, Rahul Dravid should be manager of Chelsea. Ajay क्या हो गया भाई आपको? मतलब as it is, भाई he's not able to manage what he's doing. Again, we have spoken about that as well in the beginning, Ajay. ये तो बहुत ही funny था, but anyway, मतलब thanks for making a smile during this time. But again, I know, just coming back to it, and I know second half शुरू होने वाला है. Liverpool नंबर काफी लोग बोल रहे Klopp sack. But again, I'm repeating myself. 1-3-0 loss, or maybe 2-3-4 2-0 losses, or 1-0 loss to 3-0 loss, I don't think is enough, especially for a manager who's kind of built an identity to the club. And that is what Klopp has. As much as Mato as an opposition fan wouldn't mind that, because I just Klopp as a manager, a man manager, I don't mind him, right? So, but again, pretty sure he's not going to leave Liverpool, and he loves Liverpool, you know that. I was almost the same, like when Jose Mourinho left Chelsea the second time. I know हम बहुत ही बुरा कर रहे थे 2016 में, लेकिन मैं बोल रहा था again, I can relate to it. I think probably Mohammed can, because
again, I know we don't want to go into personal stuff, but Jose Mourinho himself was going through a lot of personal stuff there. वहाँ पर it was already going through a bad time, and that was a time when the club had to be with him, and that is where club did not, do that. So again, ये part company वाला, I understand. Like I will think about this way. If I'm in a job, and I know that's something that happens in a job, unfortunately, in any job. And just to share with you, and I've been lucky enough not to be sacked in many of my jobs. Again, touch wood, ठीक है. और मैं हमेशा रिजाइन किया हूँ, लेकिन मुझे मालूम है lot of people have talked about behind my back that, oh, this guy's been fired, so it's a very wrong perception that sometimes we have in football. Unfortunately, as in the football world, media world is a little bit dirty, यार, मतलब that's a fact, you cannot deny that. तो वो होता है. तो again, we take it with a pinch of salt is what we mean, simply. Don't आप सब चीज believe मत करिए. Klopp is legacy manager. Even if they finish 10th, they won't sack him. 10th का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, they won't finish 10th. यार, what do you think? मतलब who are your top 4 looking at the season and transfer windows over now? यार ब्राइटन का बड़ा अच्छा चांस लग रहा है इस पॉइंट पे, एटलीस्ट लाइक द वे लिवरपूल प्लेइंग, चेल्सी प्लेइंग, ब्राइटन को हम लोग हैप्पीली एक्सेप्ट करें टॉप 4 टीम एट दिस रेट. बट नहीं, I think Chelsea will bounce back. वो conditions apply ना if Potter stays there. Ankit, if it's alright, should I just refresh my stream? For some reason, your voice is lagging for me. Lagging? Yeah, probably you should then. For me, it seems fine though. What I would recommend is you to use wired earphones. I think it happens because when you use unwired earphones, if you have any, that'll help. But if you don't also, you can just refresh and try once. That's perfectly fine, bro. Okay, I'll refresh and give it a shot and see that. Perfect. Liverpool has been sussed out. Too much dependence on the wings and very little creativity through the middle. And अब तो press भी हो रही है आराम से Liverpool. Gomez can't defend. Yeah, मतलब again मानव थोड़ा सा surprising है that today Gomez is starting again. Big squad. 5 substitutions होने के बाद big squads आते हैं, लेकिन अब rotate ज़्यादा होगी. Does that mean that teams are vulnerable? तो वो हो सकता है maybe, I don't know. लेकिन I kind of believe that after the full team is there, who's playing, the first team is playing proper, I still believe that Liverpool will come back after the international break. They just need like a week's break, in my opinion. Again, I don't know if you agree or not, but यहाँ पर Mohammed has switched off his camera for whatever reason. No worries, he's coming in a minute. Potter तो गया, अब no chance Brighton. मैं बहुत ही बोलने वाला हूँ लेफ्ट फील्ड. व्हाट इफ टूकल गोज देयर? नॉट, ही इज नॉट गोइंग देयर. पीपल डोंट क्लिप मी हियर. लेकिन हाँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ भाई, यू नेवर नो, ब्राइटन माइट अपॉइंट समवन आउट ऑफ द ब्लू हु एक्चुअली डज वेल. नोइंग ब्राइटन, दैट्स हाउ इट एक्चुअली गोज, राइट, लॉट ऑफ टाइम्स. लेकिन अगेन पीपल, मैं यहाँ पे वापस से मैच शुरू कर रहा हूँ भाई. अपने मोबाइल में भी मैच शुरू हो गया बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो. लेट मी सी. ओके, सोनी भाई किस में आ रहा है? लिवरपूल वाला सोनी 6 में आ रहा है ना? For people watching on Sony 6 किधर है भाई? आजा. अच्छा, for whatever reason Sony 6 दिख नहीं रहा मुझे. अच्छा, अब मैंने Sony 10 देकर Sony 6 ढूंढ रहा था. कोई नहीं, आ गया. चलो, Matip on for Gomez, better decision. हाँ, as I expected. I was very surprised that Matip is on the bench. Huge surprise there for me. Today I can guess how rival fans would have been feeling when we were shitting. well. देखते हैं भाई, मतलब यू आर राइट इन अ सेंस, लेकिन अब देखते हैं कितना लंबा होता है. ये बड़ा साइकिल होने वाला है चेल्सी का वापस से, इन माय ओपिनियन, फॉर एग्जांपल. एंड लिवरपूल का तो इतना बड़ा साइकिल नहीं है, लेकिन लेट्स सी. बट नापोली इज एक्चुअली गुड यार. दे आर टॉप. गोल हो गया भाई. नापोली हैव स्कोर्ड अनदर. मैन, व्हाट इज दिस? नापोली स्कोरिंग फॉर फन? इज इट लाइक ट्रेनिंग और व्हाट? मतलब क्या हो रहा है ये? मतलब पहला शॉट लिया, सेव किया, वापस से प्लेयर के गया. What was that, man? Zelensky scoring, I guess, नहीं? Was it Zelensky? I think Zelensky लगा मुझे देखने में तो. भाई साहब, madness. 4-0. अब ये मैं थोड़ा बोलूंगा, yes, 4-0 is a bit too much as away. और सब लोगों को याद होगा भाई, Napoli 2012 हमें याद है. It wasn't an easy game. Trust me on that. It wasn't an easy game in Napoli. Okay, not offside. Definitely not offside. I think run किसका था भाई? मैं देख रहा हूँ पास से. Okay, I'm just looking at it. Who was it? एक सेकेंड. हाँ, Zelensky है यार, 100%. 4-0. Yes, Potter is bringing a scout to them. Yes, by the way, ये भी है news. I think 3 officials are going to come along with Potter. Mohammed, let me know, bro, if you can switch on your camera, please. I know you're okay. He's here. Okay, perfect.
Yeah, Mohammed. Sorry, Aras, I don't know why my camera is glitching out now. It's all going Oh, wrong. okay, Sorry. okay. It happens. Tech glitches always happen, bro. No problem. Tell me. So, I think उस scout का नाम भी बता दीजिए CFC Blues. I don't know if you know. Let me just. I think Absolute Chelsea has quoted it. Let me see what is the scout's name. I think Chelsea scout was Scott something, right? What is his name? If anyone knows. But Um, okay, the one who breaking just news, left a few people. days back or something. Yeah, the guy who left. What was his name? I forgot. Again, Scott something और ऐसे ही है. बार बार भूल जाता हूँ उसका नाम. लेकिन कोई नहीं भाई. Breaking news है. Look at this, and this is like real big news. Then it kind of makes sense to some extent, not totally still, लेकिन to some extent. I don't know आप देख पा रहे हो कि नहीं. Let me try and okay, this view is better. By Chelsea are now close to appointing a sporting director, with sources even suggesting the new man has had some influence on the move to land the Graham Potter. So is it Brighton sporting director itself? Okay, Kyle McCauley is the person. CFC Blues, big up. कैसे हो? Thanks for joining. Thanks for sharing it as well. लेकिन भाई meanwhile Liverpool have scored. Madness happening. UCL madness is back, people, for real. अब देखिए यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज हो रहा है. यहाँ पे CFC Blues एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और साथ साथ में एक शॉट हुआ है इन द इंटर बायर्न मैच, बट दैट गॉट सेव. But Luis Diaz, if I'm not wrong, has scored for Liverpool. So it's 4-1. Luis Diaz, I think, is there in many people's UCL fantasy team. By 4-1, they have risen up finally. So yeah, what about this, man? This news is big, Mohammed. Um, yeah, for me, honestly, any Chelsea-related news right now just You is won't is believe it. coming by too fast. I'm not that I don't believe it. It's just यार Who are these अभी chaps? Let's see. 12 घंटे Again, पहले Sammy. फायर किया है UCL winning manager को, and suddenly you've already got a replacement ready to sign today, sporting director. नहीं नहीं, Where is you? यू आर राइट, Where यू आर is? राइट. लेकिन वही है ना, आप यूएसएल विनिंग मैनेजर और करंट क्लब वर्ल्ड कप चैंपियंस के मैनेजर को सैक मेरे ख्याल से तभी करोगे जब आपके पास एक बैकअप है वेयर यू आर यू आर सोल्ड ऑन हिम. मैं तो ये Yeah, but बोलूंगा. this news of this new sporting director being close to be signed by Chelsea. What if this was done 3 months ago? These conversations between Boli and Tuchel would not have happened, between about Ronaldo, about Zakaria, about so on and so forth. जितने भी signings थे जो Tuchel को नहीं चाहिए थे. एक sporting director जब है नहीं, and you've got a coach doing that kind of job, so it is frustrating for a manager. और Tuchel publicly भी बहुत कह चुका है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बैठ के हर दिन साइनिंग्स देखने का और ये करने का. I'd rather be with this team at Cobham practice every single day. So it's nice to see the players coming out in support, as you're showing. Reece James, obviously, and then Fofana did it. Fofana was the first one who did it. Yeah, But yeah. I don't know if you saw Chelsea 365 official posting the pictures of players who were coming into practice today, and they all Oh looked yeah, I did. very angry. He मतलब posted this will about you 4 hours read too ago. much? It's just a pic. It's just a picture. Is it a video? No, it's just a picture. I think he's just put pictures of players. Yeah, I'm not sure if I see the Fofana post now, but Yeah. definitely एक चीज तो मैं बोलूंगा that picture से I won't read too much into it. That's my personal take if you ask me. But again, coming back to absolute Chelsea, and yes, by the way, people, madness happening here in Napoli as things stand. Almost एक, हाँ चलो ये रिप्ले दिखा रहा मैं उसका फिफ्थ गोल हो गया. नहीं नहीं, टू मच हो जाएगा. But again, भाई जॉर्जिनियो on Instagram as well. एंड ऑफ कोर्स भाई जॉर्जिनियो पर बहुत चिल्लाया भाई. आपको याद है तो रिसेंट मैचेस में. And but still, why he was a vice captain of the team, and Tuchel made him that, right? So you have to give it to him absolutely. Lekin Graham Potter is fully open to taking over at Chelsea, and that reaching an agreement to him for him to join will be straightforward. They are expected to formally offer him the job. One of the minor factors in Antonio Rudiger's decision to leave Chelsea was his concern of the club's history of firing managers and what would happen if Thomas Tuchel left. Again, वो debatable. No, yeah, I think this, yeah, for me, this is something Chelsea. I don't know who needs to drill this into someone's head at Chelsea's board. Maybe it's the fans. They need to bring this out at stadiums and at fan meetups during Champions League. But this needs to be drilled into Chelsea that you cannot hire and fire managers every season now. This is no longer the same football where one team dominates. There's four other teams. There's Man City, who have relied on Pep Guardiola for the last 6-7 years. You know,
The way Liverpool are playing right now, they're as bad as us. They're losing 3-0. But tomorrow you won't hear Liverpool tomorrow morning sack. I'll be very surprised. I'll be very, very surprised if tomorrow morning I hear a statement saying Liverpool has sacked, what's it called, Jurgen Klopp. So for me, eh, I still can't say whether I say I can't digest it or I can't accept it. It's a decision which I feel like the board is going to regret down the line, because as a manager, if he thinks this signing isn't going to work, it's not going to work. Why would you want to force your manager into get into sign a player? Because at the end of the day, अगर आपने sign कर लिया, he doesn't play the way the manager wants to, but the manager only signs it because Boli said so on and so forth. Tuchel के ऊपर blame आएगा publicly, because obviously no one's going to say यार Boli की गलती थी. You always By the blame the way, manager first for the wrong signing. Inter almost Sorry. scored. Inter almost scored. I think Dumfries. Was it a foul? People, I don't know. But yes, यहाँ पर I know I'm seeing, I'm showing a lot of things on screen. People, if you can see it, do check it out as well. Abel, shout out to Abel यार, कैसे हो भाई? Tuchel to RB Leipzig नहीं. But who do you think is the ideal replacement? Again, Potter is the favorite. It's almost like he's verbally agreed as per multiple reports. Again, जैसे मोहम्मद ने बोला है, I will take it with a pinch of salt. अभी के लिए देखते हैं. Gordon signing was Burley's as per reports. वही CFC Blues. We showed a lot of tweets as well. आज I think you joined the stream late. हमने दिखाया about Gordon also being the data analyst वाला एक push. But again, coming to it, Mohammed, I didn't ask you that question. Like अगर I know Graham Potter is one of the favorites right now. Pretty much वो तो मुझे लगता है fact है. मुझे नहीं लग रहा था until a lot of reports came in together. What would have been your choice in terms of the way Chelsea has a squad and the way Chelsea has been run? मतलब एक होता है ना, in world football, this is the manager that I think will be the best. वही है ना यार, पॉटर आएगा, थोड़ा बहुत अच्छा करेगा, स्ट्रगलिंग टाइम आएगा, फिर एक विंडो खुलेगी तो विंडो में 2-3 साइनिंग्स होंगी, सडनली नेक्स्ट सीजन आया, खत्म, ही इज गॉन. If that's what Chelsea want, तो फिर तो they can hire anyone and fire anyone. For me, even Zidane becomes useless because you UCL अगर जिता देगा, then you'll say यार क्या ये प्रीमियर लीग नहीं जिता पा रहा. जब तक एक मैनेजर अपनी कोर टीम नहीं बनाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा. Tuchel बहुत बार कह चुका है कि I have not had the perfect time to get signings, and now Raheem Sterling's come in, Koulibaly, Fofana, Cucurella, Zakaria, Aubameyang, all of these guys have come in, and not only that, but there have been 3 or 4 good young signings as well. So Tuchel knows that he's brought in 7 quality players for the next 5-6 years, youngsters as well, especially Fofana and Zakaria as well. He's only 24, obviously on a loan, but if we gave him another month, maybe if we were having this conversation a month from now, I would have said fair enough. You've had 2 months, you're not doing well, World Cup aane wala hai, break ho jayega, this and that. You need to realize Tuchel has been working from all the way till the sanctions. जब से हुए तब से Tuchel ने break नहीं लिया है. Probably a week off, maybe maximum. He's been acting as a sporting director, he's been acting as the manager, he's been acting as everything at the club. At one point, he was handling press conferences like a champion at Chelsea, answering all questions which he shouldn't have to in the first place. Oh, he's the best. In my opinion, you know what, Mohammed? He is the best when it comes to handling the media, man. I've not seen anyone as good as him at Chelsea. Agreed. Ever. The way he would speak, the professionalism. Exactly. कोई वो नहीं था, आवाज में attitude नहीं थी, कुछ नहीं था. Even at a time of uncertainty, he was like, you know what? If Chelsea has nothing, we have a bus. I'll drive that bus to games. He doesn't care. This guy. You know what? Todd Bowley. नहीं यार, मैं बोलता हूँ यार, Todd Bowley उसमें थे नहीं क्लब में. अब again, we might assume that they know the kind of commitment Tuchel has shown. कल यार, we are talking about 2-3 months, 4 months back, right, Mohammed? Yesterday, I have actually downloaded a video. For copyright issues, I cannot show that. By the way, Kvicha has been finally substituted, looks like it, in 57 minutes. Is he injured or what? I don't know. Yeah, 4-1 is too good for them. Anyway, for Napoli. लेकिन कल ही उन्होंने बोला है, जब 100 मैच के लिए पूछा था ना, he said that I wish we have hundreds and hundreds and hundreds to follow. Yep. Talk about the commitment, man. Talk about basically feeling as your own. That's what he had no idea, man. वो गई. ये एक perfect example है उन सब लोगों के लिए जो हर report believe करते हैं. People who are out there believing the fact that Tuchel walked away from this, because that was the first thing that came out. I remember after the sacking, the first thing that came out was Tuchel was not ready to
listened to Boli, and Tuchel walked out. When I heard that, I was like, yeah, this is not Tuchel. This is not someone who 2 months ago was saying he'll do anything for this club. This is not the Tuchel who at Stamford Bridge was on the verge of crying when he saw his banner up there within a year of managing Chelsea. So Absolutely, man. As in, I'll I probably pull up that pic exactly as well, man. Again, we have to get those things up, yeah, because those he that he video deserves it. has been on my feed all day, and I've been looking at Yes. it and going, yeah, Yeah, you yeah, know what? The moment that came up, even I got emotional. I'm being very honest. That's because about when you actually see that, you feel that okay, what's happened is okay. This is the man who actually got us to that position where me as again as someone who's following the club for 23 years now, for me, I know how difficult it was year in year out in the Champions League. And yes, Premier League, we have not done well. I have to admit and say that we've not been convincing at all, considering a squad, but Champions League victory, I think, is overlooked. For a lot of people, it's a given that come on, man, it's a Champions League, it's a competition, man. How many clubs in England, leave apart Europe? How many clubs in England people have won more than one Champions League? That's a quiz question. Please tell me, let me know. That's what as in the English Premier League, the top clubs you're talking about. There are hardly what Manchester United, Chelsea, and what Nottingham Forest and Liverpool. Nottingham, That's all. Aston Villa have one, I think. They have Yeah, one. yeah. So basically, Maybe we are that. talking about what, three or four, and that's it. Yeah, Again, top clubs की मैं आप बात करूँ तो just Manchester United, Chelsea, and Liverpool. Correct? To be very honest, maybe in modern Arsenal day. have two. Oh no, Arsenal have none. Maybe. Yeah. What are you saying? Arsenal have zero. Did they? Please, Oh yeah. zero Oh, Champions League, man. Come on, that that's good. That's going that to be that, existing. that sorry, the final loss. Sorry, they lost Yeah, the. yeah, they just lost a final, man. Anyway, but coming back to the point that Tuchel has bought that, as in for me, yes, you can't sit on your laurels, but not that he was. I think it was more the players, so players have to be equally responsible. But again, we know that it's a ruthless game, especially when it comes to Chelsea. Pretty sure when it came to the, by the way, Neuer with a save and a kick. Yeah, we Kick him can't out. talk about Tuchel sitting on his Champions League win because Jab, Mm-hmm. you look at the recent press conference, and not once do I go, this guy has an ego of a Champions League winner or someone who's just won who's won three major trophies at Chelsea. He's as humble as any other manager, and even after those Carabao Cup and FA Cup losses, there was not a moment where Tuchel said, "Oh, but we're the champions of Europe. We've done this, we've done that." He always is. He's always someone who's very humble with the way he speaks in press conferences. So yeah, I mean, honestly, when Mourinho left in 2015, I was sad. I was like, yeah, such a great manager. And then uske baad, what's it? When Lampard left, that was the most hurtful one. And then today, someone like Tuchel, who I thought had a very good future at Chelsea, and he would be here for the next 5-6 years. Fans will fall in love with the fact that Jose Mourinho back in the 2004. I'm sure you witnessed it live. This the four seasons at Chelsea, the major trophies Yeah. we won. That was going to be the I, next. I, I won't Tuchel was even going to be lie, the next. Mohammed. I remember Mourinho the first time that he parted ways with Chelsea because of Shevchenko episode almost. Yeah, Trust me that I actually cried. I actually cried. And the only time when I've actually cried, I know I was far too young then. But the fact is, Robin and Mourinho kind of going were the only two reasons why I did. But Tuchel, yes, probably I did not. But the video that you're talking about is on my feed as well. I think that made me emotional. I have to be honest. Okay, by the way, Inter Milan clearly had a handball for me. I think it was a handball. Definitely is going to VR. I think it was Skriniar. I think it was a handball, but ball hit to hand more so, in my opinion. Let me know, people, what do you think? And yes, Manav, thanks for the data. And yes, meanwhile, I'm trying to bring up that again. I'm not sure if I can play that video on the feed. I don't think it's allowed, but again, I'll try and bring up that pic at least. Uh, but yeah, as in again, you know one what will telling be that. interesting? sorry to interrupt, but Yeah, you yeah, know what no will be problem. interesting? Kukurea seeing what's it called, Potter in training. I actually have a video for that. I'm going to show you all a video. I have a video for that. Pretty much sure I have a good meme for that. But see, this is That'll what be an interesting this is content. also telling. As in, at the same time, as much as I love the fact that I'm backing Tuchel more than Boli in this what has happened. लेकिन Yeah. अगेन हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये भी चीज हुई है जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं आप देखिए मतलब Chelsea FC Vlogs has shared that, right? So this is something that is a problem in terms of the defense. It has been a problem since the latter part of last season.
for whatever reason, we have been conceding like almost what we were conceding in the Lampard, and that's why मैंने पहले stream में दिखाया था Lampard के last 13 games was Tuchel. Lampard last 13 games are arguably better than Tuchel in terms of results. You know that? I actually showed the stat. लेकिन overall Tuchel has a far better record than most Chelsea managers and generally many EPL He's managers. top 5 in points per game. Correct. So overall he's far better. Yeah, लेकिन and if I recently, filter that out, sorry to interrupt again, but if I No problem, filter that out to 50 games plus, then it's he's top 3. Then it's only Mourinho, Conte, and Tuchel, I think. Yeah, I think I overall का भी शायद मेरे पास open होगा. Let me see if I pull it up again. This is what I showed. देखिए आप. This is a fantastic record, to be very honest. If you actually think Yeah, about it. he's only got what? Anyone watching the stream right now, comment would you have believed that you would sack a manager for losing 16 games? 16 games, all it took. Yeah, 100 games that too. 16 That's losses, the sorry, thing. 16 losses. Yeah, 16 losses in 100 games, man. That's like no way. I think it's about recency. You know what has happened? मैं इसलिए last 13 games का दिखा रहा था पहले because recency bias is something which probably Todd Burley and all will have because उन लोग तो यार as much as आप बोलोगे they must have researched a lot before taking over Chelsea. But maybe in terms of results, footballing performances इतना नहीं देखे होंगे ना टुकल का. So that is what probably the data is probably shared now. This data is probably shared more compared to the other data. But yeah, what type of football does Potter play? By Potter, from what I understand, definitely likes to play a free-flowing football, which is also possession-based. And of course, the best part about Potter, I definitely like his football, is that he's quite flexible. I've seen him in between the games or even alternate games going straight at the back and going forward at the back, which kind of is what Tuchel was hesitant towards a lot towards the last part of last season. Lekin ironically, this season he wasn't hesitant, Mohammed. So you can't say that. I don't think system has anything to do with that or the style of football. Correct? No, not at all. Credit to Potter for what he's done at Brighton. Man, what a goal! Sorry, man, but what a goal! This is probably goal of the season. I don't know. I might be overreacting or what. Sane has scored one of the goals of the season. I would say it's a team goal. It's almost like a Fabregas, giving the ball to Shirley against Burnley. It's like 1-2s, and bong. Wow, man, what a goal, man. This is some goal. Bayern Munich again. Bayern Munich fans out there, आपको पता है भाई, मैंने तो बोला है कि भाई Bayern Munich has got to be one of the favorites of the Champions League. मैंने recent poll में डाला था Bayern Munich. Everyone was like, come on, bhai, you have to put Barca, not Bayern. I'm like, bhai, in that group, okay, it's an own goal after all that. That's the funniest part of it. Lekin Koeman and Sane had like 2 back-to-back 1-2s, and Onana, who's been their best player inters, has come out. Lekin I think Skriniar ne try kiya clearance ka, ball hit his basically abdominal region and went into the goal. So I think it's probably an own goal. I don't think it was probably it was on target, but I don't know. Man, people, bhai, अगर आपने मिस कर दिया ये गोल वापस से देख लिया. What a goal, man, Bayern Munich. As much as I don't like a team dominating football, मैंने बोला है भाई, this is not the group of death. Trust me, it is not. Bayern and Barca are far better. What is your take there? No, I think group to difficult hai. If I can remember, it's Barca, Bayern, and have they scored another one? नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, नापोली वाला ग्रुप ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, नापोली लिवरपूल वाला. To be if I'm honest, not wrong, have they scored the second goal? Is that the first one? yeah, it's a second goal. Bayern has scored the second goal. First goal तो पहले हो गया था ना. तो आप देखिए, no, because I just started watching. Group A में basically, if I'm not wrong, Ajax, Rangers, Napoli, Liverpool. People in the chat, correct me if I'm wrong. That one for me was Napoli, Liverpool, but again, looking at Liverpool, it might be Ajax's a good chance for Ajax to come out of that group. That's what people are saying. Liverpool third. I still don't think so, because again, playing at Anfield, bhai, they need to get they will get 3 wins. हाँ, वो तो atmosphere ऐसा है कि वो. ओहो भाई, माने मार ले यार. माने मेरा UCL फैंटेसी टीम में तू मार ले. क्या लेगा भाई मारने का. I forgot to substitute players. That's the worst part. But anyway, I'm focusing on PL fantasy so much that I've given up on UCL for this year. By the way, Tottenham hugging, हिंदी वाला hugging. अब देखिए यहाँ पर मार्च से है, I know, but come on, at Spurs they should be doing better in my opinion. भाई again, Spurs
अब देखिए कॉन्टे ना बहुत ही shrewd काइंड ऑफ मैनेजर है who gets the results at the end of the day. I know it's cup competition where it's not great, लेकिन क्या लगता है भाई कॉन्टे जो प्रीमियर लीग में भी मतलब इन अ स्ट्रेंज वे इवन टॉक अबाउट टुकल एंड कॉन्टे, मतलब आई हैव आल्सो गॉन ऑन रिकॉर्ड, आज सुबह मैंने आज दोपहर को बात किया था कि कॉन्टे का जो एपिसोड हुआ था ना प्लस रोनाल्डो का नॉट गेटिंग रोनाल्डो देन हैविंग दैट फाइट विद कॉन्टे और व्हाटएवर, राइट, मे बी द फैक्ट दैट दोनों ही केस में as in terms of marketing the club it has gone negative, so maybe that is something that Todd Boehly and team might also have taken, that what is the PR level that Tuchel brings or maybe does not bring to the club. The fact that Ronaldo ke shirts bhi sale nahi ho rahe, do you think PR has anything to do with this at all? No, I hardly believe any of that. The reason I say that is because when a manager is getting you results, you don't necessarily give a lot of thought to other things. And especially when Tuchel, I think even though he gets criticized on Twitter, and I hardly believe they look at Twitter comments and all that, but when you've got 40,000 fans in the stadium each week chanting his name, I think it should be clear to Boli that he's a fan favorite, and that would not be happening if Tuchel wasn't up for the mark. So realistically, PR for me doesn't play a big role. And I think a few comments on the YouTube one, I think I just see someone from Khatib Anwar, that the one where he says Tuchel's sack seems like it isn't fully due to current results, but something more, like something inside issues or something. I completely agree. It is something that Chelsea are going to hide for as long as they can, but eventually it'll come out, and that'll be that when we find out that reason, it'll be more हाँ interesting. वो भी लेकिन पूरी सच्चा नहीं होगी मोहम्मद. For me, that's the thing. We can go on and on and on about कि क्या था, it's happened, and I guess we're still talking about it because we are unhappy with the decision, but at the same time, speculate करना कि reasons क्या हो सकते हैं ये वो. At one point, we're just gonna have to stop that and say, all right, it's happened. Let's accept it. Move on. Let's support whoever comes in next and respect the fact that he can do a job. No, I absolutely hear you there. Again, मतलब we have to take it with a pinch of salt. Everyone hearing जो भी late join किए, and again एक मैं stat, I think मोहम्मद खुद late join किया था, let me actually share this one stat, which again it's more about Graham Potter, the player, the person whose favorite supposedly verbally agree कर दिया है. भाई ये record है Potter का. Are you impressed? Super impressed. Are you much into stats? I am. I'm a very stats centric person, but at the same time, I do like. It's not overwhelming at all. It's quite underwhelming, yeah. Yeah, no, it is. For a Chelsea manager. I don't know. I'm gonna look at Brighton in this one. Fair enough. Ostersund and Swansea, respect to their fans and all of that, but I want to see his record in the Premier League. And looking at this is a sackable offense at Chelsea. Sackable meter होता है ना वो बोली के ऑफिस के बाहर लगा हुआ managers. In fact, just to add to that, मोहम्मद जो आपने बोला ना, देखिए पहले 2 सीजन्स में, एंड एवरीवन करेक्ट मी भाई जो भी देख रहा है और देखेगा बाद में, भाई पहले 2 सीजन्स में जो किया था ना पॉटर ने, he was criticized a lot for not coaching his forwards enough to be finishing better. I don't know if that you remember. In terms of creation, they were really great, and people really liked Brighton football. Even they were promoted and they played in the first 2 seasons. But finishing man Neil Mopai, we all remember the kind of misses he had. Correct. So wow, that has been a problem for Chelsea as well. Tuchel has not been good enough to coach the forwards to score for whatever reason, and the same forwards are scoring in their earlier clubs. So is it, I don't know, a deja vu? I don't know what to say. यार वहाँ पर I am not too overwhelmed by this, to be very honest. इसलिए मेरे expectations तो काफी low है. मुझे लगता है ये another 6 months. I'm giving it 6 months. लोग 12 months कह रहे हैं, next Christmas कह रहे हैं, मैं 6 months दे रहा हूँ. वो या तो सैक होगा 6 months के बाद, या तो भाई he will be absolutely fantastic one. It cannot be in between नहीं रहेगा नहीं. मुझे नहीं लगता Potter is going to work at Chelsea. Respect to him and his skills, but the level of pressure Chelsea, like the last thing, as a lot of people mentioned on social media as well, the last thing any manager wants after a loss is to have to worry about that tomorrow he won't have a job. By the way, Inter almost scored, but good defending again by Bayern. I think they kept the line well. Something for United, but things did work for United. But same thing though. Again, United took a very long while. I'm hoping that we are not in such a long cycle. We were still winning when we were not really, great in terms of playing football consistently, or be it, not having a consistent manager. मैं तो United का इस season का example लेऊंगा सिर्फ, और मैं कहूँगा यार at least they were patient. If they wanted to first 2 game के बाद fire कर देते यार Ten Hag को.
but they knew if they हाँ stuck with मतलब the इट हैड plans. हैपेंड विद एवर्टन बिफोर, रिमेंबर कोमेन का भाई कोमेन हाँ, आया था तो उसमें हुआ ही था शायद, जहां तक मुझे याद है, एज वेल एज तो एक और क्लब थी शायद. there must be like, do Chelsea owners need some glasses to see KR? There must be a reason why Man City don't fire Pep after a Champions League loss, and they don't win a Champions League. There must be a reason why Klopp hasn't been fired after such a bad start to the season. There must be a reason why Eric Ten Hag is being backed by his club. Arteta. I'm gonna bring Arteta into this because Arsenal last season, and Arsenal fans watching the stream right now will agree with me on this. Kitna Arteta out chala tha last year. Every game Arsenal lost. Even if it was a win, Arteta out hota tha because they're like boring football hai, ye hai, wo hai, whatever. And look at them now. Yes, they lost to Man United this weekend, but they are the fluidity they play with is what something Chelsea should look at and say we need to achieve that level of fluidity in our football. So it's just about sticking with one person. I don't think any Chelsea fan saying ke यार Zidane को ना लो या Pochettino को ना लो ये whatever so on and so forth या Tuchel को fire करो. We're saying stick with one person, give them 3 years 2 years. नहीं जीतना भाई, नहीं जीतनी trophies अगले season. This season I don't think any Chelsea fan went in this season saying कि यार अगर 4 trophy cabinet में नहीं आती then Tuchel should not be here. No one says that because एक core बनाने के लिए उस manager को वहाँ होना पड़ता है 1-2 साल. You can't make a core in 1 year, in 2 years. In 2 months, 3 months. No, yeah, I hear you, brother. Definitely, bhai. Matlab, we hear you, but again, at some point, I love beat whether we like it or not. We have to move on. Whatever it is. Again, हम discuss तो करेंगे, करना भी चाहिए. लेकिन भाई पॉटर मतलब it's not like people thinking भाई हम पॉटर को बैक नहीं करें. हमेशा हम बैक करेंगे यार. Once he's a Chelsea manager, whoever is, we'll certainly back him. But again, what they should be doing different, we can only speculate and voice our opinion until that decision is made. They won't care, but something that we are here for and we will be doing it whether you like it or not. और आप लोग भी आप definitely बोलिए. Meanwhile भाई again याद रखना भाई आज quickly announcement भी है आज रात, that is basically we are talking about Thursday night, right? I am luckily going to be live, yes, hopefully on Sony TV tonight. और ये पोस्ट जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, शायद ये आपका ही पोस्ट था शायद मोहम्मद, जहां तक मुझे याद है आपका ही शायद पोस्ट था जब नहीं we've got a similar one but नहीं ये नहीं था exactly. But yeah, basically I remember you posting similarly as well that basically Tuchel coming out and saying this, I think if I'm not wrong, was it after the Southampton game this post? Yes, जो दिख रहा है स्क्रीन पर. So it does not take much to beat us. So these are sometimes again there might be a cultural difference. Again मैं हो सकता हूँ I might be reading too much into it. लेकिन coming up with an American consortium, I know that the European tone is sometime taken differently to an American tone because someone who's lived in America, I'm talking that. So there is a lot of things which happen. Sometimes things are not discussed, they're assumed, and that's the reality of basically life, not about any sport or any profession also. कि भाई again, as someone who's lived life, I'm just saying भाई कभी भी कुछ assume मत करिए. Assumptions are the mother of all fuckers, तो बोलता ही हूँ. That's my saying. So a lot of times you actually listen to something and then okay fine, okay this guy is actually speaking like this coming out. Malab, is he a good motivator? You never know. You might have a subconscious एक होता ना एक बना दो manager के बारे में, and you might not even discuss with Iqbal, leave about him discussing with Tuchel. तो वो चीज हुई होगी. I'm just kind of saying these all are things which have been added on about about Tuchel as well. So maybe a lot of theories चल रहे हैं आज. Again, I'm just reacting to and just sharing with you क्या क्या theories है. Again, Aubameyang, अब मैं एक लेफ्ट फील्ड चॉइस बोल रहा था भाई, उनाई एमरी क्यों नहीं? He has an unfinished business when it comes to Premier League. Aubameyang के साथ उसने अच्छा किया था. लेकिन again he didn't have a good बाकी प्लेयर फिर छोड़ के चले जाएंगे. Aubameyang ही रहेगा फिर बस. नहीं कप कॉम्पिटिशंस के लिए काफी अच्छा है बंदा, लेकिन लीग में नहीं. कॉन्टे का ऑपोजिट है. यूरोपा जीतना हो तो रख लो उसको. 1-2 यूरोपा जिता देगा फिर उसके बाद कहेगा चलो अगले टीम में जाके जिताता हूं. मरीनो का नहीं होता था जैसे अर्ली 2000 वो टीम ज्वाइन करता था, चैंपियन जिताता था, फिर अगली टीम सो ऑन एंड सो फोर्थ. पोर्टो के साथ किया, फिर ये रियल मैड्रिड के साथ था. तो वही है केस यूनाई एमरी का. वो हर टीम में जाता है, 2-3 कप जिताए वाले यूरोपा की लीग जिता के कहता है चलो ठीक है मैं चलता हूँ बस यहाँ से. मीनवाइल यार ब्रेकिंग न्यूज मैं अभी शेयर करने वाला हूँ आप लोग को.
The main reason why Tuchel actually was sacked. I've got some breaking news, people, everyone watching as well as Mohammed. Ready हो इसके लिए? Chalo, let's see. दिस इज द Let's see ब्रेकिंग what न्यूज can come पीपल out of एवरीवन। that. भाई बुला लीजिए सबको और लाइक्स दबा दीजिए, उससे आएंगे भाई ज्यादा लोग, और शेयर करिए हो सके तो। दिस इज ब्रेकिंग न्यूज भाई। इसको ये नहीं करना चाहिए था। जो मील करता है ना, ये मील करके कुछ बिगाड़ दिया है, मैं बोलता हूँ सीन अपने चेल्सी में। सिंपल एज दैट। आई थिंक टॉड बॉली हैविंग अ मील, सो आई एम प्रीटी श्योर कुछ कुछ तो यार टॉड बॉली इज हैड समथिंग, और उस मील में कुछ मिला हुआ था कि भाई इतना जल्दी कैसे सैक कर सकता है भाई तू। मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि हाउ कैन ही सैक टूकल सो अर्ली, हाउ भाई कुड ही मैन। कमिंग बैक, आई नो आई एम कमिंग एट द सेम थिंग बट नहीं, आई थिंक यार दिस, चलो ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ आता है कि यार टूखल वाज नॉट हिज मैनेजर या वाज नॉट हिज अपॉइंटमेंट, व्हाटएवर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी 300 मिलियन स्पेंड किया, 200 मिलियन स्पेंड किया है, और रिजल्ट्स नहीं आ रहे इमीडिएटली, ये वो। तो बट आई वांट टू सी व्हाट ही डज विद द नेक्स्ट वन। अगर नेक्स्ट वाले के साथ भी ये किया तो फिर ये तो रोमन से भी वर्स है, बिकॉज रोमन सोच समझ ही करता था। आई डोंट थिंक रोमन हैज फायर्ड एनी मैनेजर without, I guess, giving them the perfect opportunity. Mourinho को फायर करा था उस पूरे सीजन आई ऑलमोस्ट थिंक खत्म डी हो गया था। मट्टेयो वाज द ओनली वन जो वाज क्वाइट एविडेंट कि भाई वो उसको सिर्फ ऑन मेरिट दिया था फुल हाँ टाइम, लेकिन इट वाज नेवर गोइंग टू बी, वी ऑल न्यू दैट। हाँ, मरीनियो को भी टाइम दिया था, कॉन्टे को भी टाइम दिया था, यू नो, उसके बाद सॉरी सारी, आई थिंक I बेनिटेज can't एंड remember ग्रांट को तो like, मैं काउंट नहीं करूंगा क्योंकि दे वर रियली स्टॉप गैप एनीवे, इंटरिम थे ना, हाँ ग्रांट, वो भी एब्राहम वैसे ग्रांट ही एंड बेनिटेज। उसको इंटर्म, वो इंटर्म था, बट उसके बाद दे दिया था शायद परमानेंट। एंड बट इवन आफ्टर दैट 33 games he's got the highest points per game for Chelsea, which is very surprising. So nahi, but it's very shocking. 6 games, 7 games in, that's all it took. या नो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द 6-7 गेम्स यार, वही है मतलब इट वाज मोर अबाउट हाँ, बैक रूम में जो है ना, इट्स अबाउट ट्रांसफर्स, इट्स अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, एक बॉडी लैंग्वेज, इसलिए इसलिए मैं सब मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ओवर एनालिटिकल, आई नो दैट इससे हो अबाउट क्या रहा है पता है क्या? आई डोंट नो इफ बोली अंडरस्टैंड्स दिस और नॉट, पर उसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उस पे, as Boli's image in front of Chelsea fans. एक oh चीज था, yeah whether a manager got sacked or Taran not. Taran joined my stream bro, yeah, then he was like Boli out man the moment he joined my stream today। नहीं, बोली आउट तो नहीं कहूंगा मैं, कोई भरोसा नहीं, कल मतलब सुबह तक हो at सकता that moment even I didn't disagree with him, like मैं है। जब नींद से उठा था बोले is it for real। नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, आई वोक अप, ये कहानी मैं सुनाता हूँ। आई वोक अप एट व्हाट 11 a.m. चेक माय फोन, आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू ट्विटर फॉर अ बिट, नोटिफिकेशंस देखे, ये वो देखे, एंड आई वाज लाइक यार कुछ नहीं है। आई वेंट बैक टू बेड, आई वाज लाइक यार आई स्लेप्ट लेट yesterday, आई वाज एडिटिंग द पॉडकास्ट, so I woke up a little late today, and I wake up at 12:30. I look at my phone, and it's literally notifications from my friends, everyone, news. और फिर I'm scrolling, and Twitter का एक notification है, Chelsea FC club statement on Thomas Tuchel. और my first thought was कि यार कभी कभार वो लोग होते नहीं है जो अपना नाम चेंज कर लेते हैं, चेल्सी एफसी नाम कर देंगे, और फिर उसके कभी कभार नोटिफिकेशंस आते हैं हाँ बिकॉज इट्स हाँ अ रिलेटेड एग्जैक्टली वो टॉपिक। जो फेक तो है। आई वाज लाइक यार हाँ फेक है करेक्ट। यार, फेक है। आई क्लिक्ड ऑन इट जस्ट टू सी कि यार हो सकता है, और फिर मैंने ब्लू टिक देखा, I'm like यार एक सेकंड, चश्मे लगाने दो। आई लिटरली गॉट अप एंड आई वाज लाइक चश्मे What a लगाने दो pass, फिर Bayern. देखते हैं। Oh, by the way, Bayern तो almost scored a third. Huh? इट्स, By या the way, इट्स वेरी Napoli, सरप्राइजिंग। Liverpool अभी भी 4-1 है, and yes, like I've been showing on screen, definitely Champions League football तो चल रहा है भाई, फुटबॉल है, but जो बोली कर रहे हैं ना वो फुटबॉल नहीं, something else है, तो something else has happened. That's why I'm showing it on screen, people, because यार it was all about the meal, जैसे मैंने दिखाया था। I think that is about definitely some there was something added there, लेकिन यहाँ पर okay, for whatever reason I think Mohammed has just been disconnected, but he'll probably come back. And meanwhile, oh my God, let's see what are the scores of other matches. Meanwhile, Chelsea तो भाई अपने ग्रुप में तो लास्ट है as things stand. But let me add Mohammed again. So let me just share the screen of the matches. क्योंकि again multiple matches happening. People, आप लोग कौन सा देख रहे हो अभी? Bayern pretty much sure जीतेगी. I don't see Inter coming back in the last 7-8 minutes. 2 goals करने हैं. Yes, they have made changes. By नापोली the way, confirmed, Napoli 4-1 even वो भी हो गया है confirmed. So I don't see any. Barcelona winning as well. Yeah. तो I mean, credit to Conte, he जीत गया बच्चा गेम। अरे 2 में मार दिए, ये कैसे हो गया यार?
कौन मारा एंड भाई? में जाके रिचार्लिसन शर्ट निकाला कि नहीं भाई? जो देखा है गेम बोलो। अरे शर्ट निकाला है कि नहीं बोलिए। नहीं वो गोल आ, काउंट हो गया तो इसलिए नहीं निकाली, वो सिर्फ डिसअलाउड गोल्स में ओके, था। हेडर असिस्ट बाय हॉयबर्ग। अरे हॉयबर्ग बहुत असिस्ट और गोल्स मार रहा है यार फॉर एफपीएल एंड यूसीएल फैंटेसी पीपल। आई डोंट नो इफ ही इज इंप्रूव्ड ऑन दैट अंडर कॉन्टे बिकॉज द वे कॉन्टे इज प्लेइंग एंड इवान पेरिसिच इज अ गिवन यार। नॉट श्योर मैंने लिया था इवान पेरिसिच को, आई शुड हैव प्रॉब्ली एनीवे। लेकिन हाँ, बार्सिलोना हैव टल्प्ड विक्टोरिया प्लेजेंट। हाँ, एक गोल मैंने दिया था विक्टोरिया प्लेजेंट को इन टर्म्स ऑफ द predictions I made, but Lewandowski the hat trick people. Wow. भाई लेवेंडोस्की क्यों नहीं लिया मैंने? आई डोंट नो व्हाई। क्लब ब्रूज, ओ लेवरक्यूजन लूजिंग, इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली German clubs are having mixed results, but Atletico Madrid again. भाई people are saying Simeone आज until the Potter and Poch news came out, right? People are saying Simeone. भाई Simeone, मतलब I know that he's managed a big club and egos, but again, are you convinced with him at Atletico? Yeah, realistically, I haven't followed much of Atletico, but No, but generally, मतलब Atletico has had a lot of star power. For example, यहाँ भी I know 82nd minute में red card है, but the way I will show you the lineup of Atletico, right? आप देखिए, you're seeing on screen, right? yeah. So see as in यहाँ मोराटा, अरे वे तब से छोटा छोटा आ रहा है, मैं क्या शेयर कर रहा हूँ पता नहीं. Anyway, they have मोराटा, जाओ फिलिक्स, अच्छा मोराटा तो we have seen the bad side. Potential है इस टीम में, and I think Koke, Lorente, देखिए these are all people. Molina is a good signing they've had. Saul, yes, very question mark considering हमने देखा है, like Morata. Carrasco, I think is a brilliant winger. Witzel, I know center back is not the ideal position, लेकिन Jimenez हमारे भी target पे थे. Oblak is probably on his day one of the best goalkeepers. तो आप देखिए पूरा squad में है. They have a very strong bench. Rodrigo de Paul is one of the better midfielders out there in world football internationally. Griezmann obviously has a great day he can do. तो इतना ज़्यादा potential के बाद में what they are achieving is really underachieving, right? I think they've only won the La Liga 3 years back, 2 years back, कुछ ऐसी था. वो भी हाँ, 2-3 they points won the La जीते थे Liga बस. quite recently, यार, absolutely. 2 years ago, I think it was. Suarez was crying, I remember the day, and he was like, वो Barca final day तक गया था जो Madrid और Real Madrid और Correct. Atletico Madrid के बीच में. हाँ. Correct. I think that's another team who have trusted in a manager. I know I keep coming back to Tuchel and the manager situation, but that's another team who stuck their guns on one person and stuck with him. So, I mean, it depends. Yeah, club to club goals. I think with Atletico, they know if they can win the La Liga every few years, win a few domestic competitions, they're happy with the manager. Unlike Chelsea, who want to go. Obviously, her club का ambition होता है जीतना Champions League and that and so on and so forth. But talent है उस टीम में, talent है with Felix being there. Morata तो नहीं कहूँगा talent, but Felix obviously that being there. Llorente is someone who's good as well. Oblak obviously good goalkeeper for them. Witzel a good center back. Koke in midfield. So it's a good lineup. And not just a lineup, but a good squad. They might be able to do something this season. But let's see. Again, as we all say, Champions League में कुछ भी हो सकता है. अगर Chelsea down and out beat Atletico, who haven't lost a game in 6 months. चलो मेसन माउंट का भी आ गया यार. One thing I was waiting. मेसन माउंट का भी आ गया. यार मुझे पता है क्या चाहिए. I want someone to write a paragraph or a statement rather than just a thank you. अरे वो आएगा अपना टेरी से आएगा देखना. टेरी वो सब करेंगे, ये सब करंट प्लेयर्स नहीं करेंगे ना. वो नहीं वो अभी पॉटर जब आएगा उसके 4 गेम के 4 लॉसेस के बाद वो कुछ और पोस्ट करेगा एंड देन सडनली नाउ एवरीवनस गोना बी लाइक हाँ इसको पता है क्या होने वाला है. नहीं द रीजन बीइंग दैट देखो एवरी प्लेयर हैज अ प्लेयर रिप्रेजेंटेटिव आज के दिन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? तो मतलब वी हैव टू लुक एट दैट एंड दैट्स अ रियलिटी. उनको भी प्रेशर बनता है, तो आई डोंट थिंक इट्स इट्स अ गिवन फॉर देम टू कम. लेकिन वो ये द ओल्ड स्कूल वाला चीज चलेगा. केपा मैन इमेजिन भाई, केपा मतलब अगेन केपा को टूकल ने काफी प्रेज दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम he has not made him number one despite a lot of people saying that Mendy should not be, right? I know वो arguable है, लेकिन केपा doing this, man, imagine भाई, मतलब you have to give him the credit. पीआर लग रहा है अब मुझे. फफाना का पीआर नहीं लग रहा था मुझे, रीस जेम्स का पीआर नहीं लग रहा था मुझे, अब पीआर लग रहा है क्योंकि सब लोग एक साथ पोस्ट कर रहे हैं एक के बाद एक. हाँ, थियागो सिल्वा's wife ये नहीं है पीआर, ये तो वो है. ये अपने पति के लिए प्यार करती है. नहीं भाई ये तो है. हाँ बट नहीं मुझे अब जो पोस्ट कर रहा है ना मुझे वो पीआर लग रहा है. मुझे लग रहा है कोई ईमेल आई है
कि यार सब लोग थोड़ा बहुत कुछ लिख दो, कुछ कर दो, वो वाला चल रहा है। फफाना का बिल्कुल। मुझे नहीं लग रहा था सुबह, रीस जेम्स का भी नहीं लग रहा था। हो सकता है एक को देख अभी के यार दूसरे ने किया मतलब हो आई वुड कुछ। नॉट इवन से पीआर, इट्स मोर लाइक इट्स ऑलमोस्ट पीयर प्रेशर। हाँ, कि एक ने किया दूसरे ने किया, बट रीस जेम्स और फफाना ने तो आई थिंक सबसे पहले ही किया था, तो हैट्स ऑफ टू देम फॉर बीइंग देयर। Yeah, exactly. And again, Chaloba, again, the fact is coming, Chaloba has not been backed as much, people are saying. In fact, Javi Vela का चालबा की पता है आया। स्टोरी में, इफ यू लुक एट इट, हम्म, वो हम्म, स्टोरी में जितने भी प्लेयर्स हैं आर ऑल प्लेयर्स दैट वर नॉट वांटेड बाय टूखल। अलोंसो, वर्नर, टैमी एब्राहम, चालबा हिमसेल्फ, पुलिसिक भी है आई थिंक उसमें। yeah. अगर इफ यू कैन पुल इट अप क्विकली, इट्स ऑन द एब्सोल्यूट चेल्सी पेज। तो चालबा के Oh में yeah, I read it. I read it in the beginning. So basically, क्या है ना, हाँ as in the entire list. So again, we just talk with Shrey. मतलब क्या है ना, मतलब Pulisic and Ziyech fans probably are leading the line because of that, because it was very clear that those two are definitely there in that list. लेकिन हाँ, off late it was obviously Chalobah and Werner also, because उनको chances नहीं मिले off late from the season onwards, and that might be one of the things that we are talking about, right? लेकिन I know आदित्य आप FPL के लिए पूछ रहे हो। एफपीएल के लिए आप वेडनेसडे नाइट को थोड़ा जल्दी पूछ रहे हो यार, कम बैक ऑन फ्राइडे नाइट हम करेंगे एफपीएल स्ट्रीम यहाँ पर। नहीं तो हम गेम वीक प्रीव्यू करेंगे, तो उस पर आना, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ डोंट मेक अ सब्स्टिट्यूशन ऑन वेडनेसडे यार, यू नेवर नो विद इंजरीज। तो मैं तो वेट करता हूँ। आई डोंट नो अबाउट यू मोहम्मद, हाउ डू यू डू? मैं ऑनेस्टली डेडलाइन से 2 घंटे पहले जब नोटिफिकेशन आता है ना डेडलाइन आ रही है, ज्यादातर लोग वही करते हैं, हम भी हाँ डेडलाइन वही, स्ट्रीम इसलिए करते हैं। हाँ वी नो दैट वही होने वाला है लास्ट में। मैं खुद वो जब तक स्ट्रीम में लाइव ही जब तक सब वो ट्रांसफर करता एग्जैक्टली हूँ। जब तक वो पीएल का नोटिफिकेशन नहीं आता ना कि भाई अब कर ले कुछ, अब तो कर ले। ईमेल आता है एक, मतलब आई डोंट नो यू गाइस, आदित्य आप सेट कर सके हो, करे हो भाई। मैं तो बोलता हूँ उसमें आपके टिप्स भी आएंगे, लेकिन टिप्स वही है ऑन द, अगर फ्राइडे, इस फ्राइडे मैच नहीं है ना, तो सैटरडे होगा बिकॉज ऑफ यूरोपियन आई फुटबॉल। थिंक तो सैटरडे, सैटरडे नून भाई, आदित्य एंड एवरीवन वाचिंग हु विल वॉच लेटर एज वेल, सैटरडे नून को हम करेंगे अराउंड 12:30 या 1:30 हम करेंगे स्ट्रीम। आई थिंक 3:30 डेडलाइन होता है, तो विल डू कपल ऑफ आवर्स बिफोर डेडलाइन हम करेंगे। वहां पर हम प्रीव्यू भी करते हैं वीकेंड का, और एज वेल एज वी टॉक अबाउट एफपीएल। एंड मैं खुद लाइव ट्रांसफर करता हूँ यार मेरे खुद की टीम्स में दोनों, नहीं, आई एक थिंक ऑलमाइटी डेडलाइन, ब्लूज अच्छा एफसी। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियन टाइम, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड, आई वाज लाइक हाँ, इंडियन टाइम, इंडियन टाइम। हाँ दैट्स व्हाट आई बाय डिफॉल्ट डू, बट एनीवे। तो यहाँ पर आई एम जस्ट ट्राइंग एंड सीइंग द स्कोर्स। मीनवाइल नेपोली 4-1, एटलेटिको मैड्रिड 0-0 अभी तक है। क्लब ब्रूज स्टिल लीडिंग लेवरकुसेन 1-0, बार्सिलोना 5-1 विक्टोरिया प्लेजेंट, and Bayern Munich 2-0, same as Tottenham, which is also beating Marseille 2-0. Bhai, I don't think there has been really a close game आज. Maybe you can say Atletico Madrid and Club Brugge, the Group B वाले games. मतलब Group B is interesting then, yeah. Imagine Atletico Madrid, Porto being on 1-1 point, Club Brugge being on 3 points, and Leverkusen being on 0 points. मतलब on paper, I was thinking that maybe Atletico Madrid and Leverkusen might be the favorites there, or Porto, Club Brugge now have a maybe chance, huh? that's the thing with Champions League, a few of these teams, if they can come up with a few upsets na, so Yeah, it'll go a long way. like Zagreb. Porto maybe, Zagreb, and now they're gonna go into Milan's game with full of confidence, Correct. or top of the group, 3 points leading by 2. They need one win, and then suddenly one more win after this and a draw, and you're talking about them qualifying for the round of 16. So it's not very hard to do, by the way. They've still got 5 games to earn 6 points in, so it's not a hard job for them. एक दो draws कहीं से मिल जाए, a win against maybe Salzburg या फिर Milan, you know. So yeah, it'll be very interesting this Champions League season, and with the big teams of Chelsea, Liverpool being out of form, other teams can kind of come in and sweep away a few points if needed. Yeah, absolutely. And again, people watching, भाई किसी ने नहीं किया है सब्सक्राइब, not only to Almighty Sports Plus and Almighty Blues FC, and yes, this is an announcement, यहाँ देखिए मैं डाला हूँ, hopefully the testing works fine, so we'll be live. लेकिन हाँ, it's my as an honor to be live second time, hopefully हो जाए। लेकिन not just that, do not forget CFC Talk podcast, do not forget Shrey FC. I have linked those channels in the description below, so please go and give a hit the subscribe button. भाई पहले ही 3-4 लाइन में है, आपको मिल जाएगा, टैग्स इजीली है, जस्ट क्लिक करना है, आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है। और सेम थिंग अबाउट ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस एंड ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, इन केस यू फॉरगॉटन। चलो कोई नहीं, मोहम्मद हैज गॉट अ कॉल, एंड एनीवे आई थिंक द मैच इज एंडेड पीपल। यस, तो इंटर वाला हो गया भाई, इंजागी शेकिंग हैंड्स,
And I know something about Italian football. I know Allegri did not have a great statement before yesterday's match. But लेकिन trust me, Bayern Munich should have won that game at least 4-0. सच में बोल रहा हूँ, maybe 4-1. चलो इंटर को एक देते, लेकिन I think both the goalkeepers did a tremendous job. I have to say, especially Onana. Uh, Obviously, own goal था second goal, लेकिन I have to say the moment of the game was Sane doing that 1-2 with Coman. Definitely first goal भी साने ने मारा, तो साने आर्ग्यूबली मैन ऑफ मैच. और लास्ट में लड़ाई कुछ हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है. लोटारो खुश नहीं है कोई चीज से, पता नहीं. अगर आप लोग को पता है तो बताइए, अगर आप लोग यू आर एबल टू हियर व्हाट इज हैपनिंग द कमेंटेटर्स. लेकिन दूसरे गेम में जो हम फोकस करते हैं, नापोली लिवरपूल. नापोली हैज आउटप्लेड लिवरपूल इन द फर्स्ट 1 hour, एब्सोल्युटली आउटप्लेड, और 4 गोल मारा Napoli ne. Quiccia has been substituted. Have the audacity to substitute Quiccia, their star player, within 55 minutes. I don't know if it's an injury, लेकिन if it's not, then भाई they really are confident, Napoli. लेकिन Liverpool got a good goal back, Luis Diaz if I'm not wrong, लेकिन not enough. After that Napoli ने अच्छा शेप रखा है, और last minute of stoppage time वहां पर बाकी है. Klopp, अभी दांत चबा रहे अपना, क्या बोलते हैं भाई, he's kind of biting his teeth. Let's see what Atletico Madrid has scored, people. भाई last minute में ये क्या हो गया? Hermoso scoring in the 90th minute. Wow, I know that Porto was on 10 men for the last 8-9 minutes, लेकिन वो टरेमी उनके फॉरवर्ड थे, तो I don't think it would have mattered as much. तो Atletico Madrid scoring in the last minute is huge for that group. And again हम अभी बात कर रहे थे about group B. Group B काफी इंटरेस्टिंग हो गया. Atletico Madrid now getting 3 points, looks like stoppage time बाकी है, लेकिन 10 men Porto, I don't see them scoring, to be honest. Club Brugge has scored as well against Leverkusen. So वहां पर Atletico Madrid and Club Brugge leading the group together. Barcelona obviously has got a 5-1 victory, and Tottenham have got a 2-0 victory. By again, Tottenham fans will be kind of secure a bit. Okay, I don't know, Mohammed, if you're there, if you've done the call, but I think okay, you are here. Perfect. So I'll just show the scores on the screen to end it. I know a match or 2 matches are technically going on, but it's almost done. So again, thanks, Mohammed, for coming on. I know it is quite late into the short notice as well, but again, always great to have you. Of course, it's always nice to be on your stream. Yeah, and you know what, right side में एक और एक न्यूज दिख रही है. I know आजकल प्लेयर बहुत बोल बचन कर रहे हैं भाई. Arteta really surprised after Leno claims Arsenal exit was by politics. I talk about it. I think Shrey भाई एक दिन ना सारे मैनेजर एक टेबल पे बैठेंगे लंच में, मील they'll have a meal और एक एक करके सब प्लेयर्स की क्लास ली जाएगी, एक एक करके. आजकल प्लेयर्स काफी ज्यादा फ्री हो रहे हैं. हाँ, बस जाते जाते आई थिंक एक चीज मैं ढूंढ रहा था भाई, फाइनली मिल गया है. So I think we have to end the stream. As much as we are going to welcome the new manager and new director of football from reports, again not confirmed report, but those are reports from multiple sources. भाई ये तो बनता ही है. मतलब टूकल का जो ये वाला जो मोमेंट था ना, this is what probably I think मोहम्मद आप बोल रहे हो. I know it's not a video, but still probably this thing is something which I'm pretty sure फुलम वाले मैच में होगा. क्या बोलते हो? पता नहीं why it's not loading in for me, but I'm guessing it's the poster at home. Yeah, or the banner at home. Yeah, it's a poster. Yeah, honestly, if fans really want to make themselves heard, then okay, I've got it. I get that. So if fans want to get themselves heard, then maybe pull out a Tuchel chant next game. Obviously, don't do it. अगर उस time तक Graham Potter आ जाता है, then that's just disrespectful to him. नहीं होगा, मैं तो बोलता हूँ उसके बावजूद होगा. That's my personal होगा, opinion. वो अलग बात है, but I'm saying maybe it shouldn't happen अगर if we've got a new manager. अगर interim manager है, कोई backroom staff से कोई take over कर रहा है for now, then you do it and you make sure your voice is heard, because Boli should know कि यार at the end of the day fans run football, no one else does it. As much as directors at high and level. Chelsea are the best exponent of that, considering what happened for the Super League, na? I'm getting a call. Sorry, I'm just mute myself. No problem. Exactly. Again, I might be ending the stream, and yes, people, it has been a brilliant watch along. Of course, by the way, there is an announcement for people who might have missed it. भाई, ये announcement है नीचे जो आपको दिख रहा है बैनर में, वो भूलिएगा मत. लेकिन again, congratulations to all the winners. I believe Barca और दूसरा मैच जो चल रहा था, I think if I'm not wrong, वो चल रहा था. एटलेटिको मैड्रिड का अभी तक चल रहा है. ये क्या चल रहा है भाई? एटलेटिको मैड्रिड कितना खेलेगी भाई? बंद कर दो. कितना स्टॉपेज टाइम है वहां पर? देखते हैं. बहुत ज्यादा स्टॉपेज टाइम है. For whatever reason, penalty to Porto. What? VR is checking. Are you serious? Are you serious? 1-1 हो गया है. Madness, man. ये खत्म नहीं होगी भाई ये UCL की मैच डे 1.
Porto have got a last minute stoppage ka last minute bhai. Talk about basically that I know recently kab Liverpool score ki thi Fabio Carvalho ka, I know Syed is in the chat. By Porto has got a last second penalty almost. The decision stands after VAR and Hermoso enters the book for a handball in the box. And Hermoso जो score किए थे concedes that handball in the box and penalty. It is Uribe who scores for Porto and it is 1-1. तो भाई हमने वापस दिखाना है scores, updated scores before we end for the night. And again, yes, आज रात 8 बजे भाई सब लोग याद रखना, मैं शायद भी करूंगा definitely to be there in terms of posts etc. लेकिन हाँ hopefully testing होगा उससे पहले, hopefully ठीक हो and everything will be fine. Of course the topic will be Chelsea, pretty much sure that they expected, yes, Porto scored बिल्कुल. अरे भाई मैडनेस, यूसीएल मैडनेस इज बैक. मतलब वही है ना, चैंपियंस लीग नाइट में यू कैन नॉट से टिल द लास्ट मोमेंट. यार दैट्स व्हाट वी लव अबाउट चैंपियंस लीग. आई नो इट्स वेरी लेट इन द नाइट इन इंडिया स्पेशली, 2:30 बज गए भाई, लेकिन आप देखिए पोर्टो एटलेटिको का अभी तक चल रहा है एंड इट इज 1-1. वो खत्म होगा भाई. आई एम नॉट गोइंग टू बी डेफिनेटली टेलिंग मोर अबाउट इट बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर वो वाला खत्म होने वाला है. और उससे ही भाई सब लोग लाइक कर देना स्ट्रीम, भूलना मत, एंड डू शेयर इट इफ पॉसिबल. पीपल माइट रिवॉच इट, हेल्प सर्टेनली. अरे डेफिनेटली यार, अगेन देखते हैं. अगेन इट्स अ सेकंड अपॉर्चुनिटी फॉर मी. इट्स ग्रेट बीइंग देयर, बट बिग अप टू एवरीवन बीइंग ऑन दिस stream as well as the channel always. Of course Mohammed is here, Shrey is always there as well, so people don't forget to subscribe to their channels as well as Almighty Blues FC जो है अपने link में in the chat. So come on people, see you. Mohammed, any final words? Yeah, good luck Chelsea. I think that's a good way to end it. Yeah. That's what The circus continues. My final word should be the circus continues. Yeah, probably Interpret it the way that you want. Yeah, absolutely. Again, thanks a lot, bro. Again, people, Thanks. shout out to everyone here. Aditya Gupta, Wana Abbas, Syed, commiserations by लेकिन first match day यार, टेंशन मत लीजिए लिवरपूल फैन. आदित्य गुप्ता, तन्मय, खतीब, दिव्यांशु, एबल, उत्कर्ष, अनिकेत, मानव, CFC Blues, again Danish, if I've forgotten someone, apologize. Suman was here. I probably forgot highlighting Suman ka chat and he probably left. I'm guessing, but koi nahi, that's part and parcel of how content creation goes sometimes live. Ayush and Ajay, AVS Pariyar, lot of people join. Again, thanks a lot for joining. But again, aaj raat 8 baje hai, Sony 10 to everyone. And of course, bhai, it is a long season, trust me. So be patient, Chelsea fans and opposition fans. Enjoy for the moment, भाई ज्यादा ट्रोल मत करिए, इतना मैं बोलता हूँ. एंड लिवरपूल तो अभी भी यार they are in the mud as we speak, but it's just one day, so don't worry, we will come back in my opinion after the first team comes back. चलो, take care, bye.